नहीं कोई दिक्कत नहीं, फेसबुक पे लाइव नहीं होगा ना, लिंक शेयर कर देंगे यूट्यूब वाला। जो फेसबुक पे आएगा वो सीधा वहाँ से क्लिक करके यूट्यूब चला जाएगा। यार डिलीट करने का दिन ही नहीं आएगा जब तक ये स्टॉप नहीं होगा ना। लग रहा है हाइड हो गया। फेसबुक खोलिए तो यहाँ पे क्लिक होम और पेज पे आइए। वो लाइव का ऑप्शन दिखा खत्म हो गया। वो लाइव कीजिए। अब कीजिए तो, अब कीजिए यहाँ तो। से कीजिए। हाँ नीचे आइए। वही वाला ले ले रहे हैं। पेज से तो गायब हो गया। ये आ क्या रहा है स्क्रीन से है कि नहीं का। अच्छा ऐसा करते हैं ना, इस पे लाइव हो गया यूट्यूब पे, इसका कॉपी कीजिए लिंक, लिंक कॉपी कीजिए, फेसबुक पे डालिए। साउंड कहाँ से आएगा बाबा? एप्पल लैपटॉप लगा हुआ तो तुम अरे वहाँ तक ऑडियो पेपर भी तो चाहिए। सर यूट्यूब पे चेक कीजिए तो सर एक बार, दीपक जी एक बार यूट्यूब पे क्लिक करके देखिए, पकड़ लीजिए। नीचे चला गया क्या? आ गया ना? नेटवर्क स्लो। यूट्यूब का पेज बताइए। @DMA झारखंड @DMA। हाँ हाँ पीछे का तो है ना। इसमें आएगा। हाँ ठीक है। आपका पीछे का स्क्रीन जो है ना धुंधला हो गया। अनुभव कहाँ गई? किस आप एक बार ना वीडियो टेस्ट कीजिए इसमें तुरंत। कुछ वीडियो चला के या ऑडियो, तो साउंड नहीं आ रहा। हेलो टेस्टिंग 1। ये ऑडियो इनपुट किसका ले रहा है? ये ले रहा है ऑडियो किसी का, ठीक है। Installed as flooring elements. Rebar mesh is finally placed for structural strength.
Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, organized Global Housing Technology Challenge during the challenge process. Six lighthouse projects at 6 locations with 6 distinct technologies amongst shortlisted technologies. One of the lighthouse projects with Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, organized Global Housing Technology Challenge India to identify and mainstream best available global technologies so as to bring a paradigm shift in the construction sector. 54 innovative technologies put in 6 broad categories were shortlisted during the challenge process. 6 lighthouse projects at 6 locations with 6 distinct technologies amongst shortlisted technologies. One of the lighthouse projects with 1008 dwelling units in G+8 configuration, along with all basic and social infrastructure facilities, is being constructed at Ranchi in partnership with State Government of Jharkhand. Using Prince Private Limited is both technology provider and contracting agency for the project. An already established system for building construction in Singapore, Japan, and Australia. This 3D volumetric concrete construction is a modern method of building by which solid precast concrete structural modules like room, toilet, kitchen, bathroom, stairs, etc. and any combination of these are cast monolithically in plant or casting yard in a controlled condition. Subject to the hoisting capacity, building of any height can be constructed using the technology. Sequential construction in the project here begins with keeping the design foundation of the building ready, while manufacturing of precast concrete structural modules is taking place at the factory. Factory finished room, toilet, kitchen, bathroom, stairs, etc. are then installed at the site with the help of tower cranes. Cable end walls are positioned to terminate the sides of building. Pre-stressed slabs are then installed as flooring elements. Rebar mesh is finally placed for structural screen, thereby connecting all the elements together. Consecutive floors are built in similar manner to complete the structure. Special features of the technology. About 90% of the building work, including finishing, is completed in plant or casting yard, leading to significant reduction in construction and occupancy time. The controlled factory environment brings resource optimization, क्या हो रहा है? improved quality, precision, and finish. The required concrete can be designed using industrial bio products such as fly ash, ground granulated blast furnace slab. हेलो 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 GGBFS, हेलो microsilica, etc. यूट्यूब में ना resulting in साउंड नहीं आ improved रहा है workability and durability. बहुत while बहुत also कम है, बिल्कुल भी साउंड नहीं है। हाँ, ये ऑडियो किसका ले रहा है? conserving natural resources. With smooth surface, it eliminates use of plaster. The monolithic casting of walls and floor of a building module reduces the chances of leakage. The system has minimal material wastage, saving
reducing in material cost, helps in keeping neat and clean construction site and dust-free environment. Use of optimum quantity of water through recycling. Use of shuttering and scaffolding materials is minimal. All-weather construction and better site organization. The LHP at Ranchi presents first-time use of this technology at such a large scale and will serve as live laboratory for further study, cross-learnings, adaptation and replication of the system in Indian subcontinent. The project also provides a unique opportunity to all stakeholders, including engineering and architectural students, to get first-hand information on field-level application of such innovative systems. The LHP will go You can sit in front so that you can have a good view of it. And we'll start in like 5 minutes. I would just reiterate the housekeeping rules for the auditorium. Since it's a complete live streaming, we would request a complete decorum so that there are no sounds coming into the live streaming. And we would request all the participants to come right in front so that you can have a good view of it. We would request all of the participants to please take your seats.
A very warm welcome to all of you. Just to reiterate once again, hope you are very comfortable out here in the auditorium. And all those who haven't done the registrations, request you to please get the registration done, or we will get the signing sheet over here itself. You could just let us know. You have the lunch coupons also along with it, along with the registration sheet. So please get your registrations done. So we are just about to begin. I would like to hand over the mic to Meetu Bharti. She is from the PMAY team,
and she is State MIS Specialist working with DMA. Over to you. नमस्कार, झारखंड का जोहार। आज के इस एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी निदेशक डीएमए श्री राजेश कुमार पाठक सर से कि वो प्लीज डायस पर आकर सीट ग्रहण करें। स्वागत है सर। अब मैं अनुरोध करूंगी श्री सीएन झा सर से, जो कि डिप्टी चीफ एसपीएनडी बीएमटीपीसी हैं, कि वो स्टेज पर आएं और स्थान ग्रहण करें। स्वागत है सर, प्लीज। अब मैं अनुरोध करूंगी श्री गजानन राम सर से, जो टाउन प्लानर हैं हमारे यूडीएचडी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के साथ, कि वो डाइस पर आएं और स्थान ग्रहण करें। स्वागत है सर। अब मैं अनुरोध करूंगी श्री अजीत कुमार सर से, जो रीजनल चीफ हडको हैं, वो डाइस पर आएं और स्वागत है सर। मैं अनुरोध करूंगी श्री एस विकास रंजन सर से, जो प्रोग्राम हेड हैं जीआईजेड के, कि वो डाइस पर आकर स्थान ग्रहण करें। स्वागत है सर आपका। मैं अनुरोध करूंगी हमारे सहायक निदेशक डीएमए से श्री योगेंद्र प्रसाद सर को, कि वो डाइस पर आए। स्वागत है सर, प्लीज। आज का यह कार्यक्रम आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार, जीआईजेड और बीएमटीपीसी के संयुक्त भागीदारी से कराया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एवं किफायती आवास निर्माण में थर्मल कंफर्ट की क्या भूमिका है, इस पर चर्चा करना है। इसे एक बड़ा ही कलात्मक नाम दिया गया है, रचना, रेजिलिएंट, अफोर्डेबल एंड कंफर्टेबल हाउसिंग थ्रू नेशनल एक्शन। किफायती आवास निर्माण के क्षेत्र में थर्मल कंफर्ट की क्या भूमिका है, किस प्रकार हम क्लाइमेट स्मार्ट बिल्डिंग्स का निर्माण कर सकते हैं, इन सारे विषयों पर आज के आगामी सेशंस में विस्तृत चर्चा की जाएगी। और मैं आशा करती हूं कि निर्माण क्षेत्र से जुड़े जितने स्टेक होल्डर्स यहाँ उपस्थित हैं, वे सभी आज की इस प्रशिक्षण कार्यशाला से अवश्य लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्य का शुभारंभ दीप जलाकर करते हैं। दीप पॉजिटिव एनर्जी एवं प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का। मैं अनुरोध करूंगी कि डायस पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों से कि वे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलन करते हुए करें। सर प्लीज। ग्लोरी। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए।
जोरदार धन्यवाद तालियों के सर। साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। धन्यवाद सर। अब मैं पीएमएवाई की एसएलटीसी टीम से अनुरोध करूंगी कि वे सभी सम्मानित सदस्यों को सैपलिंग देकर सम्मानित करेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूं श्री राजन कुमार सर से, जो हमारे टीम लीडर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हैं, कि वो सैपलिंग देकर निदेशक सर को जोरदार तालियों तालियों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। धन्यवाद सर। अब मैं पीएमएवाई की एसएलटीसी टीम से अनुरोध करूंगी कि वे सभी सम्मानित सदस्यों को सैपलिंग देकर सम्मानित करेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूं श्री राजन कुमार सर से, जो हमारे टीम लीडर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हैं, अनुरोध करूंगी श्रीमती कल्याणी पंपना निदेशक सर को कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। श्री सीएन झा सर को सैपलिंग देकर सम्मानित करें। अब मैं पीएमएवाई की एसएलटीसी टीम से अनुरोध करूंगी कि वे सभी सम्मानित सदस्यों को अनुरोध करूंगी श्री मुकेश कुमार झा, सोशल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि वे श्री राजन कुमार सर से सैपलिंग देकर जो हमारे टीम लीडर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हैं, अनुरोध करूंगी श्रीमती कल्याणी पंपना निदेशक सर जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। श्री सीएन झा सर को मैं अनुरोध करूंगी सैपलिंग देकर सम्मानित करें। ग्लोरी श्रीवास्तव जी से कि वो सैपलिंग देकर अजित कुमार सर, रीजनल चीफ हुडको का सम्मान करें। अब मैं पीएमएवाई की एसएलटीसी टीम से अनुरोध करूंगी कि वे सभी सम्मानित सदस्यों को अनुरोध करूंगी श्री मुकेश कुमार झा, सोशल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट। उषा किरण जारी मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि वे श्री राजन कुमार सर से सैपलिंग देकर अनुरोध करूंगी श्रीमती कल्याणी पंपना निदेशक सर जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। श्री सीएन झा सर को मैं अनुरोध करूंगी सैपलिंग देकर सम्मानित करें। ग्लोरी श्रीवास्तव जी से कि वो सैपलिंग देकर अजित कुमार सर, श्री फिरोज आलम का कि वो सैपलिंग देकर श्री योगेंद्र प्रसाद सर का सम्मान करें। अब मैं पीएमएवाई की एसएलटीसी टीम से अनुरोध करूंगी कि वे सभी सम्मानित सदस्यों को करूंगी श्री मुकेश कुमार झा, सोशल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट। उषा किरण जारी मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि वे श्री राजन कुमार सर से जो हमारे अनुरोध करूंगी श्रीमती कल्याणी निदेशक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। श्री सीएन झा सर को मैं अनुरोध करूंगी सैपलिंग देकर सम्मानित करें। ग्लोरी श्रीवास्तव जी से कि वो सैपलिंग अनुरोध करूंगी श्री फिरोज आलम का, श्री राजन सर सैपलिंग देकर श्री योगेंद्र राकेश कुमार जीएम स्मार्ट सिटी का सम्मान करेंगे। मैं पीएमएवाई की एसएलटीसी टीम से अनुरोध करूंगी कि वे सभी सम्मानित सदस्यों को करूंगी श्री मुकेश कुमार झा, सोशल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि वे श्री राजन कुमार सर से इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों से आए निर्माण जगत से जुड़े नगर विकास विभाग के प्रतिनिधिगण, स्मार्ट सिटी, जीआईजेड, हुडको, बीएमटीसी इत्यादि के प्रतिनिधिगण और विभिन्न संस्थानों से आए हुए छात्रगण। मैं आदरणीय सहायक निदेशक श्री शैलेश प्रियदर्शी सर से अनुरोध करूंगी कि वे स्वागत भाषण के रूप में 2 शब्द कहें। हेलो, धन्यवाद। हमारे इस सेमिनार में उपस्थित हमारे निदेशक महोदय सर का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे स्टेज में जो हमारे विभिन्न क्षेत्र से आए हुए सभी बुद्धिजीवियों का और जो हमारे इस सभागार में इस सेमिनार में उपस्थित हुए सभी लोगों का मैं सहायक निदेशक के रूप में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये 1 दिवसीय सेमिनार में हम लोग थर्मल इफेक्ट के ऊपर एक चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग ये देखना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जो हम लोगों का कंस्ट्रक्शन क्षेत्र है उसमें थर्मल इफेक्ट को कैसे हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं और किस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं जो आने वाले भविष्य की रूपरेखा तैयार करेगी। हम लोग भारत सरकार के निर्देश पे पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना एक फ्लैगशिप योजना चल रही है,
जिसमें हम लोग वैसे वर्ग को चिन्हित करके काम करते हैं जिनका वार्षिक आय 3 लाख से कम रहता है। तो उसी में एक वर्ग जिनके लिए हम लोग आवास का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग AHP योजना बोलते हैं, और जिसमें हम लोग अपार्टमेंट या फ्लैट के रूप में उन लोगों को आवास बना के देते हैं। और ये आने वाले दिनों के लिए पूरे भारतवर्ष में एक बड़ा रूप लेते जा रहा है। पहले तो हमारा एक योजना था कि जो व्यक्तिगत आवास था कि एक व्यक्ति अपने घर विशेष में बना लेता था, लेकिन अब हम लोगों का प्रचलन इस तरह से होते जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में आवास के लिए जो एरिया है वो हमारा कम पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अब अपार्टमेंट के रूप में सबको रहने की व्यवस्था करवाना है। तो ये अपार्टमेंट जो हमारा बन रहा है, इसमें हम लोगों का थर्मल इफेक्ट क्या किस तरह से हम लोग कंट्रोल करेंगे, इसी के लिए भारत सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश पे हम लोग ये एक सेमिनार आयोजित कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे स्टेक होल्डर में गवर्नमेंट ऑफिस से आए हुए हमारे टेक्नोग्राही, कुछ हमारे आने वाले जो ट्रेनिंग होंगे उसमें हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के और भी स्टूडेंट्स सब इसमें शामिल होंगे, जिसमें कि हम लोग इस पे एक लंबी चर्चा करेंगे और ये चर्चा का एक सीरीज चलेगा। और इसी रिस्पेक्ट में जो शहरी आवासन मंत्रालय के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उस निर्देश के तहत हम लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में बन रहे आवास के ऊपर भी फोकस करना है कि कैसे हम लोग इस सेमिनार का फायदा उस तरह के काम पे ले सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे डायरेक्टर सर श्री राजेश कुमार पाठक सर आप लोगों को एक संबोधन करेंगे। सर। धन्यवाद शैलेश जी। आज के इस सेमिनार में हमारे बीच उपस्थित श्री गजानन राम जी टाउन प्लानर, श्री CN झा साहब डिप्टी चीफ BMTPC, हुडको के श्री अजीत कुमार साहब और GIZ के श्री विकास रंजन जी, और सभागार में उपस्थित सभी निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकारी, कर्मी, इंजीनियर्स, सभी का इस सेमिनार में मैं झारखंड सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज का ये रचना प्रोग्राम के तहत BMTPC और जर्मन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के संयुक्त तत्वाधान में और भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स और हाउसिंग के सपोर्ट से ये हम लोग कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की जो मूल उद्देश्य है उसके बारे में अभी शैलेश जी ने कहा कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, अभी तक हम लोग इंडिविजुअल हाउसिंग का निर्माण करते आए हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, लेकिन अब कंसेप्ट बदल रहा है। मल्टी स्टोरी हाउस बनाए जा रहे हैं। AHP के तहत 3 मंजिला 4 मंजिला बड़े बड़े इमारत तैयार करके लोगों को आवास मुहैया करने का जो उद्देश्य है वो काफ़ी सफल रहा और ये प्रक्रिया झारखंड में काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस के साथ हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। एक छोटा सा फिगर मैं बता दूं कि झारखंड में अभी तक हम लोग 2,15,000 से ज़्यादा हाउस घरों को लिए हैं, जिसमें लगभग 87,000 आवास पूर्ण हो चुके हैं। 87,000 लोग अपने घरों में शिफ्ट कर गए हैं। अभी 3-4 दिन पहले मैं कुछ उन लोगों से, वैसे लाभुकों से बात किया जिनका घर बन गया है और वे अपने घर में रहने लगे। उनसे कुछ व्यक्तिगत भी हमने सवाल किया कि अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, पहले आपको क्या परेशानी थी, घर बनने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए। तो जो फीडबैक मिला, जो उन लोगों की तरफ से जो जवाब आए, वो काफ़ी पॉजिटिव था। सब एक ऐसा उनको महसूस हो रहा था कि जो कल झुग्गी झोपड़ी में रहते थे,
पॉलीथीन के नीचे अपना परिवार और बच्चों के साथ रहा करते थे, आज एक पक्का मकान में लोग रह रहे हैं। एक सामाजिक रूप से उनकी मान्यता हो रही है, उनके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। तो मकान एक ऐसा चीज है जिसकी बिना एक सभ्य समाज में कल्पना नहीं की जा सकती है कि भाई लोग कैसे रहते हैं सड़क के किनारे, फुटपाथ के किनारे। तो गवर्नमेंट का सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से कई तरह की स्कीमें चल रही हैं। अभी जो आज जो हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा LHP प्रोजेक्ट है, जो इसी धुरवा के सेक्टर 1 में जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और LHP प्रोजेक्ट को मैंने खुद देखा है। ज्वाइन करने के 2-3 दिन के बाद हम गए थे, तो जो इसका कंस्ट्रक्शन का टेक्नोलॉजी है अभी तक तो मैंने नहीं देखा है। कई शहरों में हम लोग गए हैं, अच्छे अच्छे बिल्डर से भी बातें हुई हैं, बड़े बड़े मकान देखे हैं, लेकिन जो इसका कंस्ट्रक्शन है मोनोलिथिक के लोग कंक्रीट का ढलाई करके स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उसको लाके फिक्स करके एक मकान को शेप में लाने का इनका कार्रवाई चल रही है। इसमें कल हमारी बात हो रही थी श्री विकास रंजन साहब से कि जो मकान बन रहे हैं तो उसमें एक थर्मल कंफर्ट का भी एक कंसेप्ट लाया जा रहा है। जो क्लाइमेटिक चेंजेज हो रहे हैं, वातावरण में जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, रांची के परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग तो अगर पुराने आदमी लोग खुद जानते हैं कि जो रांची का क्लाइमेट था, कितना बढ़िया क्लाइमेट होता था। यहाँ पे कोई गर्मी नहीं, गर्मी के रात में भी एक चादर हम लोग उड़ते थे, लेकिन आज हम लोग पंखा चलाते हैं, AC चला रहे हैं। तो जो थर्मल कंफर्टेबल कंसेप्ट इनके द्वारा इसमें इस स्कीम में लाया जाएगा, तो हमें उम्मीद है कि इसमें रहने वाले लोगों का एक जीवन स्तर, एक कंफर्ट लाइफ इनको मिलेगा। और जो देश में ये 6 शहरों में ही इसका निर्माण किया जा रहा है, और हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 1 जनवरी 2021 को किया गया। और उन्हीं के द्वारा एक नारा है कि घर हुआ अपना, पूरा हुआ सपना। तो हम लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। और जो भी हमारे बीच आज उपस्थित प्रतिभागी है, सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार आप लोग इस प्रोजेक्ट को देखें, समझें, और आपका जो भी सुझाव होगा वो हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और हम लोग प्रत्येक सुझाव पर गंभीरता से उस पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे, इसी विश्वास के साथ कि आने वाले दिनों में रांची में जो हाउसिंग का स्ट्रक्चर और जो हमारे निर्माण काम चल रहे हैं, वो हम लोग बेहतर रूप से कैसे लोगों के बीच उपलब्ध करा सकें। तो आज का सेमिनार में हमारे बीच काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट लोग आए हुए हैं। इनकी बातों को आप लोग गंभीरता से सुने, ध्यानपूर्वक सुने, और आपका जो भी सुझाव होगा, जो हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, उसमें भी आप अपनी बात को रख सकते हैं। और ये सेमिनार का उद्देश्य यही है कि हम लोग अपनी बातों को आप तक रखें और आपकी बात को हम लोग लेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार सभी को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपके आशीर्वचनों के लिए। आज के इस कार्यक्रम का जो एजेंडा था उसके अनुसार आदरणीय श्री कुलदीप नारायण सर, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी मिशन डायरेक्टर महुआ हैं, उन्हें जुड़ना था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, बट मुझे खेद है कि वो किसी कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी श्री शैलेश कुमार अग्रवाल सर से, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं BMTPC के। सर के बारे में संक्षिप्त परिचय है कि उन्हें 2 दशकों का एक्सपीरियंस है बिल्डिंग सेक्टर में, एंड ही इज अ की फेस बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन। तो मैं अनुरोध करूंगी श्री शैलेश कुमार अग्रवाल सर से कि वे जुड़े और अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। Thank you. Thank you. Are you able to hear me? Yes, sir. Yeah. So thank you. Thank you. And first of all, good morning, everyone. Namaskar. And I extend a very warm welcome to all the participants who are present here. And I also welcome the dignitaries on the dais. I find Rajesh Ji, Director of the Directorate of Municipal Administration. I find Assistant Director Shri Shailesh Ji. I find Family
face Rajan, who has been helping us right from the beginning when we started working with the Jharkhand government. So, first of all, sincere apologies because our joint secretary couldn't join because he has got an accident meeting and he has to attend that meeting, and he asked me to, introduce the concept in front of all of you. And, before I get into new technologies, let me just tell you that this is the first program and we have actually called it Rachna. And Rachna means, as you can see, which is written on the board there, resilient, affordable and comfortable housing. So when we talk about housing, under Pradhan Mantri Awas Yojana, the houses being built, they need to be resilient. That means safe against natural hazards as well as other hazards. Affordable. Affordable means cost-effective, economical, low maintenance, and third and foremost thing is comfortable housing. And it's been found that the way construction is going on, normally temperatures are also rising, so the buildings sometimes do not perform well as regards thermal comfort. So GIZ, I find Vikas sitting here, so I welcome Vikas, you as well. So, Vikas Ranjan, who is the head of GIZ in India, he came up with the proposal that we would like to study, because we are implementing these new construction technologies across India. We would like to, concurrently, we would like to take up a study under Indo-German energy program and document the climate, document the thermal comfort of all these buildings. So it's a very innovative thing, and they have actually called this program Climate Smart Building. So this is a word which you all must understand, that climate smart building. So as per climate, your buildings should behave. Okay. So through this program, he will be organizing along with the Ministry of Housing and Urban Affairs and along with the BMTPC around 75 programs. As all of you know, this is 2022 and we all are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. So 75 programs will be organized across all these 6 LHP sites, as well as in other parts of the country. We will be interacting with the bureaucrats, policymakers, engineers, architects, and other professionals, even students, and take not only the agenda of innovative construction system, but also functional and structural performance and their parameters. Okay. With this, let me just briefly tell you, you all are very lucky or very fortunate, and I must congratulate the Jharkhand government that the kind of project, it's not that I'm speaking at Ranchi, I'm telling this is for the first time in our country, this technology, which is called 3D volumetric model precast concrete construction, is being used in India at such a large scale. And as Mr. Rajesh was telling you, you all should go and visit the LHP site of Ranchi, and it is unbelievable. You just can't imagine that the house can be made in the factory, and then you can just like you bring a transistor to your house and start playing it in a similar fashion. The entire house is made in the factory and brought to your site, and you start using it. So that kind of innovation has gone into the construction sector, and you are very fortunate, and these houses are going to be the milestone in our country when we talk about the technology transition and technology transformation. Let me also tell you that every time when we talk about this innovative construction technology, there are 2 things which are being asked to us. First is the structural performance and cost. Okay, so let me tell all of you here that whenever we talk about cost is not something which is initial cost. Okay, the cost is to be life cycle cost. So remember this word, take it from me, it is life cycle cost. And life cycle cost is nothing but summation of initial cost plus the operation cost. The cost incurred during the service life of the building or during the lifetime of the building. That cost is enormous. Okay, and then third is the disposal cost, which as engineers, as professionals, we are never concerned of. See, whatever we build, it's our responsibility that once the service life of that product or building or whatever you are doing is over, how that thing is going to be disposed in the environment. Is it going to be detrimental to the environment? So always remember
remember life cycle cost, which is summation of initial cost plus maintenance cost or operation cost plus the disposal cost. So for all these systems, the cost, life cycle cost is minimum because maintenance cost of the building is minimized because these buildings are made in the factories. There are no distress, there are no leakages, there are no cracks and all, thereby reducing the maintenance cost. So remember that the cost, overall cost is less than the cost which is incurred during the service life of a conventional building. Second thing which is being asked is functional performance. And when we talk about functional performance, we always say कि हमारे दादाजी के टाइम में तो इतनी मोटी थिकनेस की वॉल्स होती थी और उस घर में तो एसी भी नहीं चलता था और पंखा भी नहीं चलता था. अब यहाँ पर आप थिन वॉल्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इसमें कैसे थर्मल कंफर्ट आएगा इसमें. सो दैट इज व्हाई दिस स्टडीज बीइंग टेकन बाय GIZ and they will be completely documenting because what happens if I tell you that these buildings are as good as your conventional brick construction, you may not believe. So we are trying to document the entire thing and through that documentation we will try to convince the beneficiaries and other technical and our technical fraternity that these buildings are as comfortable as your other buildings. And also if something is required, some intervention, technical intervention is required to make this building comfortable, that will be also suggested. Let me also tell you here, we are having thinner walls. So these thinner walls provide more space inside the room, but at the same time, because these walls are made with the high-grade concrete and we are adopting a lot of other passive measures like orientation, openings, and the shading of buildings. So those kind of things make these buildings climate smart or thermally comfortable. So believe me, as far as these technologies are concerned, they are superior not only in terms of structural performance but also in terms of functional performance. Okay, and with this, let me also tell you that we are going to organize 75 of this kind of programs, and this is the first time in our country that we are holding this kind of program where the experts will address you regarding even the minute details of thermal comfort, how it is to be calculated, how it can be minimized. See, also remember one thing, when we talk about thermal comfort, most of the time, the thing which comes to our mind is put AC or put the other active devices. That is not the solution because that should not be done. The thermal comfort need to be brought in by careful selection of materials, site, and your orientation of your buildings and your openings and shading. Okay, so with this, I congratulate the Jharkhand government to organize this first ever program on the Rachna. I also wish all the best to GIZ team and on innovative construction system. There will be one lecture on innovative construction system, and through this Rachna program, we are also concurrently organizing webinars. I think some of you might have attended yesterday's webinar. So through these webinars and through this Rachna program, our aim is to understand these technologies and implement these technologies in our future projects. Let these technologies become the technologies for the future construction of our country. So again, I wish all the very best to all of you and wish this Rachna first program a grand success. Thank you very much. Thank you so much, Saleh sir, for your precious time, valuable talk and best wishes. Thank you so much. इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी श्री गजानंद राम सर से कि वे दो शब्द कहें और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपनी शुभकामनाएं दें. मंचासीन निदेशक नगरीय प्रशासन श्री पाठक सर, रीजनल चीफ हेडको श्री अजीत जी सर और GIZ के हेड और इस सभागार में उपस्थित विभिन्न विशेषताओं से परिपूर्ण व्यक्तित्व लोग, ये जो आज का सेमिनार है या विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है, मैं पहली बार अनुरोध करूंगा आप सबों से कि आप पूरे मन से इस कार्यक्रम में रहें
मन से रहने का मतलब थोड़ा व्हाट्सएप से भी दूर हो जाएं, थोड़ा अपने कार्यालय की चिंताओं को भी पीछे छोड़ दें, तो आप यहाँ से कुछ ग्रहण करके जाएंगे। क्योंकि यहाँ जो डिस्कशन पैनल है वो बहुत रिच है। मिस्टर शाह का नाम इसमें हम देखे हैं और वो अपने क्षेत्र में पूरे इंडिया लेवल पर इसमें विशेषज्ञता रखते हैं, और मैं भी उनसे कहा हूँ कि मैं भी आपको सुनूंगा। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि आप इस कार्यक्रम में केवल भाग लेने का, आज जो सहभागिता का जो ये औपचारिकता है उसको ना निभाएं, मन से भी रहें। तो आप जब कुछ लेकर जाएंगे तो होगा क्या कि आप भी एक मास्टर ट्रेनर से नहीं तो कम से कम ट्रेनर बन जाएंगे। मतलब आप जो ज्ञान यहाँ ग्रहण करेंगे एक दूसरे को देने के लिए बताने लायक होंगे। यही सफलता होगी इस कार्यक्रम की। इसलिए आप पूरे मन से रहें। जैसा कि आप पूरी जो चीज है उसका लबोलबाब यहाँ से प्रारंभ होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हैं, जिसमें आज जो हम लोग जिस कार्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं उसी का एक छोटा सा अंश है। सस्टेनेबल का डेफिनेशन हेलो हेलो चेक। डेवलपमेंट यही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ही जो है से हमारा माइक खराब हुआ। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग भाषण देंगे, समझेंगे, लेकिन चीजों को अमल जब व्यक्तिगत रूप में लाना होगा तो उस चीज को भूल जाएंगे और बोलेंगे कोई देख रहा है थोड़े। मतलब वहां पर हम लोग चले जाते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि ये जो आज का कार्यक्रम है वो एक छोटा सा पार्ट है और उस पार्ट को ग्रहण करना है, अपने व्यक्तित्व में भी लाना है और दूसरे को भी इस चीजों को ट्रांसमिट करने का प्रयास करना। मैं प्रयास शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि ऐसा नहीं कि आप समझें कि आप ज्यादा मतलब जुगवानी टाइप की बात बोल रहे हैं जिसको करना ही करना है। लेकिन आपका जो ऊंचा व्यक्तित्व है और हर एक क्षेत्र में जो ऊंचा ज्ञान है आपके पास, वो आपको बाधित करेगा कि आप उस तरह से एक्ट करें, निर्माण करें और निर्माण में सहायक हों। जहां तक चीजें कम की सवाल है, विश्व में सबसे कम चीज कौन सा है और जिसको रिसाइकल हम नहीं कर सकते हैं, वो क्या है बताएं? वो है आपका जमीन। जमीन का हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। अगर रिसाइकल करेंगे तो भी बहुत छोटी मात्रा में करेंगे, जो हमारी पूरी आवश्यकता है उसका नगण्य होता है। जैसे बोलते हैं ना कि आपको सी में हम रिक्लेम कर लिए, अपना इधर कर लिए, उधर कर लिए, लेकिन वो जो है से अपना सेटिस्फैक्शन के लिए है वेल्थ के साथ में। अदरवाइज जो हमारा रिक्वायरमेंट है पूरी जनसंख्या का और आने वाली जनसंख्या का, उसके लिए बहुत कम है। तब हमारा क्या होगा प्रिंसिपल्स? हमारा प्रिंसिपल्स होगा कि उस चीजों को हम करें प्लानिंग से। हम प्लानिंग पर कुछ विशेष नहीं बोलेंगे, लेकिन सबसे पहले चीज ये होगी कि आप प्लानिंग से करेंगे। जैसे आपको लाइट हाउस बन रहा है, लाइट हाउस क्या है? लाइट हाउस सबसे बढ़िया प्लानिंग किया हुआ है। कितना है? वेल प्लान्ड है वो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? प्लानिंग जब हो गई तब क्या चीज होगी? कंस्ट्रक्शन की बात होगी। कंस्ट्रक्शन कैसा करें? कंस्ट्रक्शन ऐसा करें कि कम समय में हो, साइंटिफिक हो, आपको जैसे अभी हम सब बोल रहे हैं कि थर्मल आपको फ्रेंडली हो,
मतलब थर्मल से जो कंफर्ट हो, आपको कंफर्ट में डिस्कंफर्ट में होता है, उसको कैसे हम मिनिमाइज करें थ्रू कंस्ट्रक्शन, कि आपको उसमें थर्मल को हमको डी थर्मल करने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग करना पड़ता है उसको कम करना पड़े। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको समाप्त किया जा सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आपको उसको ये किया जा सकता है। जैसे आप लोग अगर जो प्लानिंग से हैं या कंस्ट्रक्शन से हैं, उनको पता होगा कि इको निवास संहिता 2021 का आपको पब्लिकेशन हुआ है। अगर नहीं होगा तो कभी गूगल करके देखिएगा, आपको मिलेगा। उसमें कैसे हम कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को कर सकते हैं जो अपने क्षेत्र में होंगे, अगर उसको लगाएंगे तो लगेगा कि आपकी ज्ञान में भी वृद्धि हुई है, और आपके ज्ञान से आपको समाज में जो आपको कंस्ट्रक्शन हो रहा है उन चीज़ों में क्वालिटेटिव चेंज हो रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ गुड विशेष करता हूँ इस आज कार्यक्रम के लिए, और आशा करता हूँ कि आप यहाँ से समय बिता के नहीं, कुछ चीज़ें ले के जाएंगे जो कि आपका बोल्ड अक्षरों में आपके दिमाग में रहेगा, और आप उसका इस्तेमाल अपने प्रोफेशन में करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद सर आपकी ज्ञानवर्धक बातों के लिए। टेक्निकल खराबी के लिए क्षमा चाहूंगी सर। अब मैं अनुरोध करूंगी श्री अजित कुमार सर से, जो कि रीजनल चीफ हुडको से हैं, कि वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में अपने विचार रखें। Respected Director Saab, Rajesh Padraki, Sri Gajanan Ram, Chief Town Planner, Sri Jhaji, Deputy Chief Building Materials and Technology Promotion Council, and all the distinguished participants. Sabhi ko mera namaskar. I'm extremely happy to be here as I'm attending the first of such workshops in the country where we are deliberating on sustainable as well as affordable technology for construction of homes. You know, HUDCO has been associated with housing in the country, and what we are talking now has been taught and propagated by HUDCO 30 years back. We have been talking about lovable, livable and affordable homes, and through building center movement we have propagated appropriate and innovative technology throughout the length and breadth of the country. Now the things have changed. When I came to Ranchi on transfer, everybody said Ranchi is a beautiful place and very good climate, and when my wife asked for a ceiling fan, my house owner was laughing at it, saying that why do you need a ceiling fan in Ranchi? But now all my neighbors have put two air conditioners, and that is disturbing me. And I think next week it's going to be 40 degrees in Ranchi, and we have to really think about our future. Traditionally, we have been comfortably living in mud houses, thatch houses, tile houses in our villages. As we migrated to city, our situation has changed. We are thinking about multi-story houses, but are we really comfortable? Is it really affordable? These are the questions. When it comes to mass housing, we have to think of all these things, because future is going to be very, very difficult. And resilient buildings, what is happening to all these places when unplanned construction is happening? If there is a flood, if there is a cyclone, if there is a fire, how people are affected? The entire housing, poor planning, poor materials are taking lives of thousands of people in various places. So it's high time that we have to think. Yes, there are basic principles, site selection, planning, and use of appropriate materials through which we can achieve all those things. Building has to be in line with the nature. Of course, site selection may not be possible in most of the projects nowadays, because government is implementing the projects where sites are available, not suitable, many places. But through planning, whether you plan a circular building or a rectangular building or square building, it's up to you. And how you orient it. Through small techniques, you can reduce
the temperature inside the house. We can build in a lot of comfort. What we are doing these days is that we are making windows, we are putting curtains, glass curtains, and putting air conditioner inside. Whereas if you open it up, it will allow the air changes. If you have cross ventilation, small planning techniques, if you adopt that, you can improve the condition of humans inside the house. Most of the people, I think, we are living in oven-like structures nowadays. And we all know that concrete absorbs a lot of heat and it radiates. But still people have got a fancy for concrete structures. But you know, HUDCO has been propagating about mud construction. We have constructed a lot of soil stabilized mud buildings. Even after 30 years, they are excellent and the temperature inside the homes are lesser. So now we are, earlier we were just mixing mud with our hand and constructing homes. Now machines do that. We are talking about 3D printing because mass construction, speedy construction, and at a lower cost we had to do it. So now we have 3D modeling of buildings, 3D printing actually. So in such situation, we have to really think about the materials which we use. Are we going to be really comfortable with this? But I'm sure that there will be a lot of deliberation on the new technologies, innovative technologies. Mr. Jha sir is there. He is an expert on that topic. And all of you should take the benefit of this seminar and take back the small principles and use it so that we can have better, comfortable, affordable homes for everyone in the country. With these few words, I wish a success for this program. I congratulate the state government of Jharkhand for organizing such program in the country, first time in the country, and thank you for inviting me for this program. I wish all the success. Thank you. थैंक यू सर. हमारे बीच श्री CN झा सर हैं जो अगले सेशन में न्यू एज इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे. लेकिन उसके पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री S विकास रंजन सर को, जो कि प्रोग्राम हेड हैं GIZ के. उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि ही इज़ प्रेजेंटली वर्किंग एज अ प्रोग्राम मैनेजर इन IGEN, GIZ, Climate Smart Building Project and supporting Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India in policy making, climate change, thermal comfort and energy efficiency. He possesses a graduate degree in electrical engineering and is a certified energy auditor as well as renewable grid manager from Berlin University, Germany. So Vikas Ranjan sir, please. Thank you very much. Very good morning, all of you. Thank you for inviting me over here. I think it is straight from the heart that I can feel now. Everybody who came here on the dais has talked about thermal comfort, energy efficiency, and climate change from the heart, and that is what it is required nowadays because we are in a deep soup now. I welcome Sri Pathak sir, Gajanan ji as well, from HUDCO, Mr. Ajit Kumar, and I can see faces who have really helped GIZ to organize this type of program over here, Sailesh ji and Rajan ji. So I thank you very much, sir, to have us over here and given us the opportunity to serve you better. So what is all about climate smart buildings? It is simple and solid. As it is already explained by Ajit sir as well, and a part of this was conveyed by Sri Gajanan sir as well. Everything is very simple in terms of building. Everybody is staying in building, so it is a very complex subject as well. When you talk about building, you all are knowing about the villages, houses when you go to your village,
and you have the thermal comfortable stay at your village as well. नहीं आ रहा क्या? Something is wrong? No issue. No issue. No issue. Fine, fine. So, hold on. Recently, जब मैं एक कल भी मैं बात कर रहा था पाठक साहब से, कल जब मैं recently visit किया था last time लक्षद्वीप में, what I have seen, it's mind-boggling, and I can feel the heat over there, the climate change over there. Just I will show the picture over here. You can see two pictures. One which I went to the sea while scuba diving, and saw the corals over there. You see over that page, it is completely dead. Right? Why it is dead? I will explain you why. And over here, left hand side, a small portion is still left when some fishes are around. So these are live corals. You won't see any fish over there because the corals are dead. They don't have any food to eat over there. They don't have any space to hide. So why it has been done? I asked there in Lakshadweep, one of the island, it is called Bangaram, that why it is happening. They said 5 years back the temperature of water at this point of time of place around 27 degree, but now it stands around 32 degree. The difference of 5 degree only. This is happening, and this is not happening because of climate change only, but it is all because of physical change that we are doing over there. There are lots of pollutions. Yeah, sure. Lots of pollutions also, which was man-made, of course, but a big portion comes from the temperature change, the temperature rise in the sea itself, and this is what it is happening over there. So if you feel this change, if you feel this change whenever you are going somewhere else, you can see what is happening around, and what if it is happening for the fish somewhere after some time, it will happen to us as well, when you won't find the food, and there are lots of heat which is there. So we all are dead in that stance. So what is giving what we are giving to our next generation? Nothing. And that has to come from our own act. What we are doing at present. So with this input, just I wanted to let you know about GIZ, what we are doing at present, and how much time that we have devoted here in India from the past itself, what we have done so far. GIZ in India stands around 65 years back, and I was talking to Gajanan sir as well. He has worked with GIZ, earlier GTZ, in 2006. So the presence is there, and we are working with all the ministries of India, central ministries of India. And at present, my ministry is MOHUA, where we are working for the clean energy and energy efficiency in that aspect, with respect to the PMAY schemes. So there are other things as well. We are working in climate and environment with the ministries. We are working with sustainable urban development with the MOHUA as well. We have healthcare sections, and also we are working with the private sector development. So what is all about energy cluster? We have energy efficiency, green energy corridors. That is all you might be knowing about renewable energy. And we are also promoting solar water pumps, the grid integrations with the solar, and then we have the climate smart buildings with the MHWA. Apart from it, we are also promoting EV, electric vehicles, and we are going to have policies in Delhi recently, where GIZ has supported them technically to get that policies over there at Delhi itself. So basically, if you find any work on sustainability, GIZ presence must have gone there. That is what we want. We want your input as well on this regard. Whether what sort of thing that we have to do further to improve our relationship with the common people, like what we are doing at present after organizing all these training programs,
getting the people aware about what is all about climate change, what is all about energy efficiencies and all. In the past, we have worked quite well with the Ministry of Power, where we have developed the policies. Policies, as already Gajanan sir and Ajit sir has told about this, that it is about Eco-Niwas Samhita for the residential building that we have developed. This part 1 and part 2. And we are also into the labeling of residential building. Labeling means if you are staying in a house, your house will be labeled with the star label systems. So these are already developed, and it has to come in the policies as well within no time. There is one more thing what I would like to say upon over here about a building material directory. This is also available in econiwas.com, where you find the building materials over there, and you find lots of input of the sustainable building materials, local building materials, which is there. You just go through the econiwas.com website, and you'll find many of the tools and the databases which is already available with the websites. So what about climate smart building? The objective is very clear. We wanted to have the innovative passive designs. We wanted to promote the local sustainable building materials, the best available technologies, and also to build the capacity of the trainers, to build the capacity of the citizens, and to develop the training modules, and to disseminate all this knowledge to the ground level. What we can do with all this, we will. Sure. So what I will do, I will explain much more on it about what GIZ is doing in climate smart building. We will have a short break first for a tea, and then we'll continue after that. Thank you very much for your patience listening. थैंक यू विकास जी। इसके साथ ही हम अपने इनॉग्रल सेशन का समापन करते हैं और 15 मिनट का हाई टी के लिए ब्रेक लेंगे। सारे सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो सब लोग आमंत्रित हैं हाई टी के लिए। इट्स अरेंज्ड आउटसाइड, सो प्लीज। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हाई टी के साथ आपके आईडी के साथ एक लंच कूपन मिला होगा। प्लीज शो देम टू द कैटरिंग स्टाफ एंड दे विल प्रोवाइड यू विद हाई टी। थैंक यू। जिन लोगों का लंच कूपन नहीं मिला है वो मेरे से यहाँ पे आके मिल लेंगे प्लीज। थैंक यू।
हेलो, लंच कूपन आप लोग देंगे नहीं कैटरिंग स्टाफ को, दिखा करके बस अपने पास रख लेंगे. यू विल बी नीडिंग इट एट द एक्चुअल लंच टाइम एट लंच ब्रेक.
हेलो गाइज, विल बी बिगिनिंग इन 10 मिनट्स. 10 मिनट में हम लोग शुरू कर रहे हैं. Hello everyone. So we are starting in 5 minutes, please. 5 minutes.
Hello everyone. So we are going to start the program in 1 minute. Please, everybody be seated. इसका शेयरिंग है वो देख लीजिए। We would request all our participants to please take your seats. We will resume with the session. We would like to invite Vikas sir so that he can continue with the presentation that we were going on with. Could we please have all the participants back on their seats so that we can go on with the presentations and then we can conclude on time? Over to you, sir. Thank you, Glory. So I'll back with the presentation now. Basically, what we are doing at present for climate smart building. So we wanted to increase the thermal comfort by 35%. क्वांटिफाई करना इतना आसान नहीं है। थर्मल कंफर्ट को कैसे क्वांटिफाई करोगे? आपको बोलेंगे कि नहीं, आपको जो गर्मी लग रही है, आपको गर्मी कम लगे, इसको आप कैसे महसूस करोगे? तो क्वांटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वांटिफिकेशन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, और इसको हम लोग इकोनिवास संहिता जो पार्ट 1 है पैसिव डिजाइन अप्रोच में, we have inserted that formula over there. It is called RETV. तो RETV के अलावा भी हम लोग दो चीज पे और ध्यान देंगे, जिसको बोलते हैं DDH, डिग्री ऑफ डिस्कम्फर्ट आवर्स, एंड सेकंड है टेम्परेचर। तो इन तीनों चीज का कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग बताएंगे कि थर्मल कंफर्ट इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। लेकिन इसको कैसे इंक्रीज करेंगे, ये तो हमारे ट्रेनर्स जो हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो बताएंगे आपको। लेकिन बहुत सिंपल चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हो। अगर आपने एक दिन यहाँ पे ट्रेनिंग ले ली थर्मल कंफर्ट पे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आपने 10% भी ग्रास्प किया यहाँ से, तो अपने घर में कम से कम आप इस थर्मल कंफर्ट को इंप्रूव कर पाओगे। तो अगर आपने अपने घर से शुरुआत की इस चीज को थर्मल कंफर्ट इंक्रीज करने के लिए, तो आप बेसिकली आप लोगों को बता पाओगे कि थर्मल कंफर्ट होता क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी होती क्या है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन किया है, जो आगे हम और भी झारखंड में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करेंगे, ऑल इंडिया में करने वाले हैं। तो कैसे इस चीज को इम्प्रूव करेंगे, क्या हम करेंगे, एक्सपर्ट्स हमारे रहेंगे जो आपको बताएंगे। और हम लोग बाद में इसका ट्रेनर्स का भी प्रोग्राम करेंगे, जिसमें आपको ट्रेन किया जाएगा कि आप फर्दर उसको मल्टीप्लाई कर पाओ, आपको जो नॉलेज दिया जाएगा यहाँ पे, उसको आप डिसेमिनेट कर पाओ। तो हम लोग हो सकता है कि अभी नेक्स्ट फेज में इसको हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स भी कराएं ऑन थर्मल कंफर्ट स्पेशली। तो उस चीज को आपको ध्यान में लेके आना है। तो क्यों हम लोग करना चाहते हैं? तो इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो कार्बन मिटिगेशन है। कार्बन मिटिगेशन मतलब क्लाइमेट चेंज को हम लोग कंट्रोल करना चाह रहे हैं। बहुत आसान नहीं है। आज के टाइम में जो कमिटमेंट है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, अब सारे देश को मिला दिया जाए तो ओनली 14% हम लोग मीट कर पा रहे हैं उस कमिटमेंट को। तो जो टेम्परेचर है, अगर इस कमिटमेंट को हम ध्यान में रखें, तो जो टेम्परेचर राइज की बात करते हैं 2 डिग्री का, वो 2 डिग्री नहीं होगा। अगर ये कमिटमेंट हम अभी कर रहे हैं, उससे 3 डिग्री राइज होगा, 3.2 डिग्री राइज होगा। तो अगर 3.2 डिग्री राइज होता है, तो हम लोगों का जितना भी आइलैंड्स हैं, खासकर अंडमान निकोबार या फिर जितने भी कोस्टल सिटीज हैं, इंक्लूडिंग केरला, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, उसमें से आधी सिटी चली जाएगी। तो कितना हैबिटेंट को दिक्कत होने वाली है, आप उस फ्यूचर को देखिए, उस फ्यूचर को सोचिए।
और अभी से अगर आप कमिटमेंट नहीं करेंगे तो हम लोग फ्यूचर को कभी भी अपने हाथ में नहीं ले पाएंगे। सो अगर कुछ देना है हमें हमारे फ्यूचर जनरेशन को, हमें कमिटमेंट आज से करनी पड़ेगी और सोचना हमें दिल से करना पड़ेगा। अगर दिल से सोचेंगे तभी आप इस पे काम कर पाएंगे। सो जो आउटपुट्स हैं वो हम लोग बता रहे हैं कि आपको जितना हम लोग अवेयर कर पाए इस चीज के लिए कि क्या आपको करना है, कौन से बिल्डिंग मटेरियल लगाएं, किस पैसिव डिजाइन से आप काम करें अपने बिल्डिंग्स में कि आपको उसी खर्च में उसी एफोर्डेबिलिटी में आपको थर्मल कंफर्ट भी मिले, आपकी एनर्जी एफिशिएंसी भी बढ़े और आपका एक बिल्डिंग जिसमें आप रह रहे हो वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़े। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, इस चीज़ के बारे में हम लोग बताएंगे। और सर्टिफिकेट कोर्स जब शुरू होगा तो आप लोग में से कुछ लोग उसमें आ सकते हैं और सर्टिफिकेट कोर्स ले सकते हैं या फ्यूचर ट्रेनर बन सकते हैं। तो आने वाला दिन इसी चीज़ का है और हम लोग इस पे काम करना ही पड़ेगा, ये तो श्योरिटी है ही। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने पहले जो काम किया मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे कोड्स बनाए, बहुत सारे टूल्स बनाए। अगर आप econiwas.com में जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे जिसमें आप क्लिक करके आप सिंपल टूल के साथ एक सिंपल जिसको मालूम नहीं है बिल्डिंग के बारे में वो भी उसमें इनपुट डाल करके आप देख सकता है। और जो प्रोफेशनल्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, वो उसके लिए एडवांस टूल उसमें है जिसमें बैकग्राउंड में एनर्जी प्लस चल रहा है, तो उसमें भी आप एडवांस टूल के साथ आप चेक कर सकते हो कि आपका घर कंफर्टेबल है कि नहीं, एनर्जी एफिशिएंट है कि नहीं। तो उन चीज़ों पे काम ऑलरेडी किया हुआ है। आप econiwas.com में जाएंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दूसरा जो हम लोग कर रहे हैं CSB का क्लाइमेट स्मार्ट बिल्डिंग के लिए, वो उसी का एक बेसिकली पार्ट है और उसमें हम लोग थर्मल कंफर्ट स्टैंडर्ड बना रहे हैं कि अगले 50 ईयर्स में जो हम प्लान करेंगे, जो एक्शन प्लान करेंगे ऑन थर्मल कंफर्ट, उस पर हम लोग कैसे करें कि हम लोग उस चीज़ पे पहुंचे। क्योंकि इंडिया कमिटमेंट है 2070 में कि हम लोगों को कार्बन न्यूट्रल होना है। दैट मीन्स कार्बन न्यूट्रल मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी, अगर आप फॉसिल फ्यूल से भी अगर आप एनर्जी बना रहे हैं तो उसको आपको कहीं ना कहीं निगेट करना पड़ेगा थ्रू रिन्यूएबल्स। तो उस चीज को हम लोग ध्यान रखना है। और कार्बन न्यूट्रल अगर सिटीज बनानी है, कार्बन न्यूट्रल घर बनाना है, तो स्टार्ट करना पड़ेगा हमें अपने घर से। अगर आपने अपने घर को बना लिया कार्बन न्यूट्रल तो धीरे धीरे करते करते ये सिटीज में जाएगा एंड देन डिस्ट्रिक्ट में जाएगा और तब हमारे स्टेट में जाएगा एंड देन देश में जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे देशों ने इस पे कमिटमेंट की है और हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं वो कार्बन न्यूट्रल पे बात कर रहे हैं। हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जो कि डिफरेंट मिनिस्ट्री से आ रही है कि कैसे हम कार्बन न्यूट्रल सिटी बनाएं। अभी मुंबई का प्लान था, लक्षद्वीप का प्लान है, फिर लेह लद्दाख का प्लान है कि इसको कार्बन न्यूट्रल हम लोग यूटीज बनाएं और स्टेट बनाएं और सिटीज बनाएं। तो मैं आग्रह करूंगा यहाँ पे भी जो लोग बैठे हैं, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी झारखंड को, क्योंकि एक स्टेट ऐसा है जहाँ पे रिच मिनरल्स हैं, रिच फॉरेस्ट हैं, उसको बचाए रखने के लिए हम भी यहाँ पे कुछ प्लान करें आने वाले दिनों में कि इसको हम लोग कार्बन न्यूट्रल स्टेट के बारे में बात करें। तो हम लोग थर्मल कंफर्ट स्टैंडर्ड बना रहे हैं। वी आर ऑल्सो मेकिंग रेप्लिकेबल डिजाइन कैटलॉग। रेप्लिकेबल डिजाइन कैटलॉग के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा अभी, आप इसका कि ऑलरेडी इस फेज में है। इसमें हम लोग टैम्पलेट बना रहे हैं। टैम्पलेट में मतलब उस टैम्पलेट में आपको एक ऑटोकैड फाइल होगी, एक ड्राइंग्स होगा, उस ड्राइंग में क्या क्या बिल ऑफ मटेरियल्स है, बिल ऑफ BOQs भी रहेंगे उसमें, और एक बीम मॉडल होगा, उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट है कि नहीं, ये थर्मली कंफर्टेबल है कि नहीं, वो सारे एक डाटाबेस में रहेगा। तो उस डाटाबेस का इनपुट होगा, वो आपके GSTC वेबसाइट में आएगा, टूल वाली डाटाबेस भी वहाँ पे आएगा, आप उसको देख सकते हैं। इससे पहले हम लोग करीब 4000 एप्लीकेबल डिजाइन ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। अगर आप econiwas.com में जाएंगे तो वहाँ पर एप्लीकेबल डिजाइन में ये 4000 कैटलॉग मिलेंगे आपको। लेकिन ये अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहे हैं हम लोग हैं, इसका कैटलॉग अलग होगा, इसका टाइपोलॉजी अलग होगा। तो ये 5 क्लाइमेटिक जोन्स के लिए, 5 डिफरेंट डायरेक्शंस के लिए, ओरिएंटेशन के लिए हम लोग बनाएंगे और डिफरेंट टाइपोलॉजी के साथ बनाएंगे, ये भी उसमें रहेगा। और इससे कोई भी आर्किटेक्ट या कोई भी एक सिंपल हाउस ओनर, एक स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर, स्मॉल डेवलपर भी जाकर के इसका इनपुट लेकर के वो अपने घर बना सकता है जो कि थर्मली कंफर्टेबल हो और जो कोड के साथ या एक्ट के साथ कंप्लायंस हो। वी आल्सो ट्राइंग कि अगर ये कोड और ये एक्ट, ये कोड अगर हम लोग म्युनिसिपल बायलॉज में लेके आ जाए तो जो भी घर बनेंगे आने वाले दिनों में वो इसको कंप्लाई करेंगे। अगर वो कंप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो थर्मली कंफर्टेबल होगा। हम लोग और भी काम कर रहे हैं जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बेसिकली ऑल इंडिया बेसिस पे हम लोग 25 डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट ले रहे हैं और 5 BLC ले रहे हैं जो कि स्मॉल हाउसेस हैं।
कि उसको हम लोग बताएंगे कि इसको हम लोग अगर हम लोग इसको इसमें चेंजेस ये करते हैं विद दैट ओनली उस एफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ही, तो कितना उसमें हम लोग को फायदा होने वाला है और कैसे इसको करेंगे। क्योंकि अगर 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 आज की डेट में अगर आप हमसे पूछते हैं कि अभी बताओ कि आपने कितना बनाया है घर, किस घर में जाके देखूं मैं कोई तमिल कपड़े बनाए कि नहीं, तो मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो उस एग्जाम्पल को लाने के लिए हम लोग 25 प्रोजेक्ट्स को ले रहे हैं। आप लोग भी अभी इसका एडवर्टाइजमेंट अभी आने वाला है। अगर आप लोगों में से कोई डेवलपर है या आप किसी को आप जानते हो तो उसमें वो अप्लाई कर सकता है, और फर्स्ट 15 जो कि प्राइवेट डेवलपर्स भी आ सकते हैं इसमें, फर्स्ट 15 को हम लोग इसमें टेक्निकल सपोर्ट देंगे, उनको हेल्प करेंगे कि कैसे उसको तमिल कंफर्टेबल बनाएं, क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या बिल्डिंग मटेरियल मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए, सब कुछ बताएंगे हम लोग। तो उस पर काम कर रहे हैं। और LHP परफॉर्मेंस पे तो काम हो ही रहा है, जिसमें हम लोग पूरी एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन से बिल्डिंग मटेरियल्स इसमें लगे हुए हैं, क्या इसका यू वैल्यूज़ हैं, कि क्या इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ हैं, उस चीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसकी रिपोर्ट हम लोग इसी साल हम लोग दे देंगे कि कैसे इस चीज़ पे और क्या क्या गैप्स हैं, उस गैप के साथ कैसे इसको रिप्लिकेबल कराएं हम लोग, और अलग स्टेट में कैसे इसको हम लोग और इम्प्लीमेंट करें, उस चीज़ में हम लोग जानकारी देंगे। मोस्ट थिंग एक और जो काम है जो कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं। हम लोग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ अराउंड द वर्ल्ड करीब अपने पास अभी 14 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, नए इनोवेशंस के बारे में, जिसके साथ हम लोग काम करेंगे और बताएंगे कि हमारे इंडिया में इस क्लाइमेटिक जोन में कैसे उस इनोवेटिव प्रोडक्ट को, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को लेके आते हैं और क्या उसमें चेंजेस करते हैं और उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम लोग 14 यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहे हैं, जिसके साथ MOU ऑलरेडी होने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उसके साथ हम लोग मिलकर के आगे जो जितने हम लोग के पास 5 अभी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं IITs में, उनके साथ मिलकर काम करेंगे और उसके जो भी इनोवेशंस हैं उसको हम लोग अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बन रहा है, इसका जो हमने बताया सर्टिफिकेट कोर्स होगा इसका, और वो भी हम लोग करने वाले हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग अवेयरनेस वर्कशॉप तो होना ही होना है। लास्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने करीब 200 वर्कशॉप्स किए थे, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 12,000 पार्टिसिपेंट्स थे। तो इस प्रोजेक्ट में भी हम लोग इतनी सोच रहे हैं कि हम लोग काफ़ी प्रोग्राम्स करें, काफ़ी लोगों को अवेयर करें, स्कूल्स में जाएं, हम लोग मैस्कट्स बनाएं, हम लोग ट्रेनिंग मटेरियल्स बनाएं, सोशल मीडिया में आएँ, और इस थर्मल कंफर्ट, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटीज़ जिस चीज़ की बात करें वहाँ पे आपको वो मिले और लोगों को समझ में आए कि एक्चुअली ये है क्या। आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे सेवरल, रांची का भी एग्जाम्पल दिया गया है। जब मैं यहाँ पहले आता था, जो स्थिति थी उस समय, आज क्या स्थिति है वो मैंने महसूस किया है। तो ये चेंज है, ये क्लाइमेट चेंज है, ये आप लोग को सबको समझना पड़ेगा। तो ये सपोर्ट्स हैं जो LHPs के लिए हम लोग कर रहे हैं। काफ़ी कुछ हम लोग इसको मॉनिटर भी करेंगे। इसमें जब लोग रहने आएंगे, जो बेनिफिशरीज हैं उसको रहने आएंगे, उसको हम लोग मॉनिटर भी करेंगे, उसका हम सर्वे भी करेंगे। हम बात करेंगे उनसे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या आपको दिक्कतें आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या अच्छा लग रहा है, वो सर्वे भी आपको हम लेके आएंगे। और सारे जो भी हम लोग जितने भी DHPs जो भी डेमोन्स्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, उसके एनालिसिस भी करेंगे, और जो भी कोड्स हैं, एक्ट हैं, उसको हम लोग बायलॉज में लेकर लाने की कोशिश करेंगे। स्पेशली झारखंड की बात करें तो यहाँ पे हम लोग करीब 14 कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, और 5 अवेयरनेस ड्राइव चलाएंगे, जो कि अलग अलग स्टेट्स में हो सकता है बिहार में भी जाएँ, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में भी जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग और अवेयरनेस करेंगे। यहाँ पे रांची में भी बहुत सारे होंगे प्रोग्राम, तो आप लोग के दोस्त हैं, आप लोग के साथी प्रोफेशनल्स हैं, उनको भी बुलाएं और उनको भी इस ट्रेनिंग का पार्ट बनाएं। और इन ऑल हम लोग पूरे अगर इम्पैक्ट देखें LHPs का, तो यहाँ हम लोग करीब 500 पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहे हैं इन ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। हम लोग 60 अफोर्डेबल हाउसिंग की बात कर रहे हैं 6 LHPs में। यहाँ पे 10 जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स हैं उस पर हम लोग काम करेंगे। अभी मेरी बात हुई थी राजन जी से भी, जिसमें हम लोग देवघर और जमशेदपुर में प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं PMU के अंदर, PMY के अंदर, उसमें हम लोग अपना सपोर्ट दे पाएँ और उसको थर्मली कंफर्टेबल हम लोग बना पाएँ। इन ऑल इसमें बहुत सारे हम लोग न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट को भी लेके आने की कोशिश करेंगे। जो प्रोडक्ट है, जो मैं बात कर रहा था बिल्डिंग मटेरियल डायरेक्टरी की, वो ऑलरेडी ऑनलाइन है, डाटाबेस ऑलरेडी है उसमें। अभी उसमें प्रोडक्ट्स और ऐड किए जा रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट ऐसे होंगे कि आपको अगर रिक्वायरमेंट है, जैसे आप आज एक घर बनाना चाहते हैं अपने से, खुद से,
आप किसी स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि आपके पास बिल्डिंग मटेरियल्स कहाँ से आएगी और क्या बिल्डिंग मटेरियल्स अवेलेबल है इंडिया में या लोकली। तो उस चीज़ को कैटर करने के लिए बिल्डिंग मटेरियल डायरेक्टरी बनी हुई है, जिसमें आप जाकर के आप उस बिल्डिंग मटेरियल को जो भी सिलेक्ट करेंगे अपने घर के हिसाब से, अपने घर के लेआउट के हिसाब से आप उसको फिट करेंगे और देखेंगे, आप कंपेयर करेंगे बिल्डिंग मटेरियल टू बिल्डिंग मटेरियल, किस बिल्डिंग मटेरियल को हम लेके आए, इंक्लूडिंग कॉस्टिंग। तो आपको लाइफ साइकिल कॉस्ट भी मिलेगी, आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी मिलेगी, आपको इम्प्लीमेंट जो कर रहे हो चीज़ों को क्या उसकी जानकारी मिलेगी, आप कंपेयर भी कर पाओगे। इन सब चीज़ों को वहाँ पर ध्यान रखा गया है, तो वो चीज़ भी आप उसमें देख सकते हो जब बिल्डिंग मटेरियल डायरेक्टरी की बात करते हैं हमें। तो इन सब को हम लोग बहुत ही स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक साथ स्ट्रीमलाइन हो जाए तो आप लोगों को उसमें बेनिफिट मिले और आप इसका फायदा उठा पाएं। अब बात करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम की। रचना इसका नाम दिया गया है, रेजिलिएंट, अफोर्डेबल एंड कंफर्टेबल। ये तीन जो पिलर हैं उस चीज़ को हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। और अगर कंफर्टेबल घर हो तो आपकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप भी अपने आप को सुखी महसूस करते हो, आपको हेल्थ वाइज ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने इस पर बात करी है और इससे बहुत फ़ायदा है। आपका क्लाइमेट पे भी अंतर आएगा, आप अपने घर में कुछ करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके बिजली बिल पे भी आएगा, आपके पॉकेट से पैसे कम जाएंगे बिजली बिल के लिए। तो ये सब काम कर रहे हैं अभी। और इस पे रचना जो है इसमें करीब 100 नंबर्स ऑफ प्रोग्राम करेंगे इस साल में, और 40 नंबर्स ऑफ वेबिनार सीरीज कर रहे हैं जैसे आपको मालूम है। आप लोग उसमें आए और उसमें भी आप लाइव देखें, LHPs का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा कि एक प्रोसेस को कैसे हम लोग वहाँ पर फुलफिल कर रहे हैं। आप ये भी कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं या जो कॉलेजेस से हैं वहाँ से वो लोग अपने यहाँ पे समर स्कूल लेके आ सकते हैं, वो लोग अपने थेसिस बना सकते हैं LHPs पे, टेक्नोलॉजीज पे। हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे उस चीज़ों में। अगर उनको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से कुछ कोलैबोरेशन चाहिए या इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स चाहिए, उनसे बात करना हो तो हम लोग उस प्लेटफॉर्म को भी क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारी पूरी इनपुट्स हैं। और हम चाहेंगे कि क्योंकि देखिए जो बिल्डिंग्स हैं वो इंडिया में अगर बात करें हम तो 33% एनर्जी जो कंजम्पशन है वो आपकी बिल्डिंग्स में जा रही है, और 33% में से वो सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग से जा रही है। मतलब हम ऑलमोस्ट हम 33% मतलब 1/3 ऑफ द CO2 एमिशन हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग बिल्डिंग से कर रहे हैं। तो जितना इसको कम कर पाए, अगर कार्बन न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं, कार्बन नेट जीरो की बात कर रहे हैं, तो फिर वो दिन आने के लिए हम लोग को यहीं से अपनी ऊर्जा को कम करनी पड़ेगी। दैट इज फुल एंड फाइनल। और इसको ध्यान में रखते हुए यही कहा कि आगे आने वाले दिनों में अगर आप देखोगे कि अभी जो कंडीशन है अर्बनाइजेशन का, वो अभी करीब 30 to 40 करोड़ हैं जो अर्बन इंडिया में रहते हैं, और आने वाले दिनों में अगले 2050 या 40 तक 100 करोड़ लोग होंगे जो अर्बन इंडिया में रहते होंगे। तो कितने घरों की जरूरत पड़ेगी अगले आने वाले दिनों में? करीब 3 to 4 बिलियन मीटर स्क्वायर और हमें एरिया चाहिए होगा। सो विद दैट मुझे लगता है कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे इन चीज़ों के बारे में, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। और आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है उनके साथ खड़े रहना है, उनसे क्वेश्चन पूछना है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी उनसे पूछ सकते हैं। जब तक आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन पूछना है, आपको इन्वॉल्व होना है ट्रेनिंग में। ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए कि हमने बता दिया आपने सुन लिया। आपको समझना है, आपको पूछना है कि ये कैसे होगा और क्यों होगा और क्यों ऐसा होना चाहिए। तो ये आपकी तरफ से क्वेश्चन आना चाहिए हमारे पास, तो ही हमारे इस पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक अच्छा सक्सेसफुल कंप्लीशन होगा। सो आई विश यू गुड लक कि आप इस ट्रेनिंग को अच्छे से सक्सेसफुल बनाएं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर माय साइड। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. So, the ground is already there. अब आपको पता है, you yourself have to be aware of the things. So this was the brief about GIZ and Government of India. कितने efforts they are taking to combat the climate change, and so many projects are running. So you are the people who have to be involved in it. And to start off, let's have, I would like to invite Sahal ji. I'll just give a brief intro about him. Saibal Sahaji, he has done his post-graduation in Urban Environment, Management and Law from National Law University, Delhi.
He has more than 28 years of experience, and he has earned his credentials like BE Certified Energy Auditor, ECBC Master Trainer, GRIHA Certified Professional, and is working as third-party assessor for ECBC in Telangana and Andhra Pradesh. He is working in building energy efficiency, green building certification, energy audits, environmental management plan for large construction buildings. He has provided training on implementation of Energy Conservation Building Code of India in the different states for the government officials of the country, including more than 50 trainings he has taken up and the awareness programs he has taken up. So I would like to invite Sahaji. But this is not, I think, thermal comfort. This is, yeah. Hello. Good afternoon, everybody of the dais. I see in front of me Mr. Jha and other dignitaries, Mr. Vikas Ranjan. They are so knowledgeable, they are doing a good amount of work all over India as well as internationally. So I have done these things, means it is a subject of my heart, these green buildings, sustainability. I have done training programs, but those training programs had some different perspective. Particularly those were ECBC training programs. I think you know Energy Conservation Building Code. Energy Conservation Building Code has been first enacted or developed in India in 2007. And on the basis of our Energy Act, Energy Conservation Act 2001. So in Energy Conservation Act, of the designated consumer, one part was commercial building. It has been observed that buildings were consuming, particularly at that time, 2001, that time, large buildings like super specialty hospitals, big hotels, 5-star hotels, are consuming good amount of energy. So the policymakers that time have thought that if this part has not been covered, so a major amount of energy conservation opportunities would be lost. So on that ground, on that thinking, thought process, these Energy Conservation Building Code came into being in India. And that Energy Conservation Building Code 2007 was based on one, I just want to tell this because of the background. Why this comfort? Why buildings? So the background means the base code on which that Energy Conservation Building Code developed was ASHRAE. ASHRAE is in the next session that would be covered. The ASHRAE, American Society Heat Refrigeration and Air Conditioning, that ASHRAE is dealing with the comfort level. So thermal comfort, that concept, even in the year 2010, was not very prominent in India, particularly this part of the country, even at Kolkata. I have met one good professor of IISWBM, one of the premier institute of India, which gives energy management MBA.
The professor told a green building would not be valid in India. So many poor people don't have buildings. They don't have place to live. You are talking about green building. In the year 2010, now in 2022, all of our affordable housing, affordable units are going to be certified and energy labeled. So within these 10, 12 years, we have crossed a lot of path. We have reached a very upgraded level. And even in your city, Ranchi, so many big housing projects are being designed and certified as green buildings, which have a good thermal, the basic qualification of those green buildings, energy efficiency, and definitely have a good environmental condition. So, when we are dealing with coming to the thermal comfort level, so what is the purpose of building? The first question to all the architects, the engineers present here. What is the purpose of building? The purpose of building is comfort. Comfort definitely from the security, from your privacy. But the principal thing is comfort. We generally talk, we have a roof over our head, the basic criteria of human civilization society. A roof over your head. So, the first criteria is comfort. There are three comforts, three levels of comforts. One, the principal one is thermal comfort, then visual comfort. In a cell of a jail, you could have a very good thermal comfort, but you don't have any connection to the outside world, and that is jail. So, without having a connection to the outside world, your visual comfort would be lost, and that is also important. So, thermal comfort, visual comfort, acoustic comfort, these hall has a very good acoustic system. So, acoustic comfort is a major part of architectural design. And then indoor air quality or environmental quality. So, that is the principal target of designing a building, to give you thermal comfort. Now, what is thermal comfort? If we just asking the definition of thermal comfort, that is here, that it is a mental state. It is a mental state that reflects happiness with the thermal environment measured by subjective assessment. So, it is not that you cannot just this comfort, it cannot be measured just with a tool, just like a thermometer, just like a voltmeter. You cannot have that thing. So, you need to assess on the basis of different criteria. Mental state. The yogis living in Himalayas and residing at minus some 10-12 degrees centigrade, without have a insulation over their bodies, and they feel quite comfortable. But we are talking about common people. So it is a mental state which reflects our comfort level. And it has been observed through survey that above 33-34 degree Celsius, you may not have your good productivity. Productivity means your daily activity in your home, as well as your thinking, your reading of your study of your children's, all these. So all would be hampered. So this thermal comfort is a major thing. Out of all the comforts, thermal comfort is a major parameter for your day-to-day activity. So, excuse me, hello. How to
to scroll down? No, it's not happening. So, arrow chalega na? Okay, thank you. So, I have already told that importance of thermal comfort, that you can increase your productivity within a zone of comfort, and that zone is defined, measured by different indices. I will be coming through this deliberation in my later slides, that how we can reach that comfort level with your design. The architects, the designer, the planners who are working at municipal level, they need to know, because each and every day plans are sanctioned from municipality. Be small, be large, but plans are sanctioned each and every day. Some buildings are born. So, if we can make the architects, the planners aware of the basic design process, then these buildings could be to some extent be thermally comfort for its occupants without consuming a lot energy from either air conditioning or other, means your ceiling fans, exhaust fans, etc. So the principal target is reducing energy consumption while giving the optimum comfort level to the occupants. The target is not purely comfort. Target is conserving energy. The root is Energy Conservation Building Code, and to conserve energy without compromising the comfort level is the target, and we are just going to define how to get that optimum comfort level by designing our envelope as well as other system, means parts of envelope, definitely wall, roof, your doors, windows, everything. So people adjust their behavior to cope with their thermal environment, adding, removing clothing, changing their posture unconsciously, selecting a heating source, moving closer to or further away from cooling or heating source. So we are doing all these in our rooms, in our homes. We are doing all these things to have the comfort level. Whenever we feel when we are perspiring, we are just switching on the fan, because the increase of air speed gives us a better comfort level. In the winter time, when temperature drops below 10 degrees centigrade, we are trying to go to a hotter place, maybe your in front of the chula in the kitchen, or any heat source, so that it gives us comfort. Along with all the insulation, wrapper, sweater, etc., we may go to the heat source. So unconsciously or consciously, we are doing all these things to be to some extent comfortable. So thermal comfort is a broad satisfaction with the thermal environment. Most people neither too hot or too cold. So how do we go to that too hot or too cold? Because a person could feel comfortable at 24 degrees centigrade. Some person could feel comfortable at 20 degrees centigrade. There are 4 degrees centigrade difference. So there is one band, one range, that within this temperature, 20 to 26 or 28, the people of this place feels comfortable. Warm
people from one place can adjust with bit higher temperature, but people from colder regions could not adjust that. India, being a warm climate, almost most of its place have a different thermal comfort band than the European or other cold countries, and we have to have our own codes, own systems to define that thermal comfort level at different temperature as well as other parameters. So thermal comfort and thermal discomfort, we have to deal with these two subjective matters to create our codes, our design parameter, to put it within our buildings. Thermal discomfort can be induced by a generalized warm or cool discomfort of the body, or by an unpleasant chilling or heating of a specific region of the body. So, in this particular slide, I have to say something. In the room, in a room or in this auditorium hall, we generally make the entire hall cool. Our air conditioning system, either high wall unit or this ceiling unit, it gives the cold air throughout the room. We don't want to spare any parts of the room without that cold air. But this room, the seats here, is for people who would be sitting and listening to the orator. So, it could be designed in that way that all the seats have their cold air over the seats. Then the entire area may not be designed for cooling. Because in aircraft, in the plane, your cooling system is over your in that way. In a temperature band, means where the outside temperature goes 40 above, then we can adopt this thing. So we could make our design in such a way, not only our building, we are talking about here, we are talking about affordable buildings, but not only buildings, our overall air conditioning, ventilation system could be designed in such a way that expending minimum, optimum amount of energy to have that comfort level. So, coming to the next part is, what are the factors, principal factors for your comfort? There are 4 physical factors and 2 physiological factors, means activity or your person related. Now the physical factors, the first thing is air temperature. Or it could be dry bulb temperature, the HVAC engineers or these people can understand that air temperature which you get from your Google app or in newspaper, that this temperature, what is the temperature right now at Ranchi? It gives in my mobile 34 or 35 degrees centigrade. So that's the air temperature. So it actually increases the discomfort level within the space. And while designing your comfort system, could be a fan, could be an air conditioning system, it actually, the more the air temperature, the more the electricity bill. Because you have to make your temperature within the room 22 to 24 degrees centigrade. Outside temperature 40 above.
So more the temperature, so more heat would be coming within your space and your electricity bill would be rising. So air temperature is a principal factor. But not only air temperature. There is another temperature, and that is called mean radiant temperature. Look, in a naturally ventilated space where windows are open, the same air is outside as well as inside. So you should feel same comfort level at your table, means at your chair in a room or in the open ground. Is it the case? No. Why not? Temperature is same. Because there is sun outside that gives you a huge heat ingress towards your body, and within the room, under your roof, that source of heat is missing. Instead, there are walls, roofs, floors, your furnitures, which are absorbing some energy and radiating to your body, towards your body. So if we can assume that there is a black body, means from my body, there is a enclosure, assumption, black body over my physical body, then there is a heat input output to the black body to from all the surfaces, and there must be an equilibrium. We know when it is a steady state, there must be an equilibrium. So the black body, what it radiates and what the other surfaces radiates, when it is in equilibrium, that temperature, equilibrium temperature, is called mean radiant temperature. So whenever all the windows and doors are open and you are sitting within your room, it is a completely different comfort feeling than the outside open air, because of that temperature. That is a different temperature, not the air temperature. Next is air speed. I have just told that just when we are perspiring, we feeling some hot, we just open the first thing we are make the ceiling fan on. Why? Because it increases the air speed within the room, and the more the air speed, the more comfort level with a higher temperature also. So the thing is temperature, air speed, and last is humidity. This humidity is the culprit in many of the Indian cities, like Kolkata, Chennai, even to some extent Mumbai, in warm, humid climate zones. Because above 60-65% of relative humidity, you may not feel comfortable, because your temperature is affected with the relative humidity, and your comfort level is also lost. Humidity, when you condition your building, if you want to have the temperature within your space 22 to 24 degrees centigrade, outside air having 35 to 40 degrees centigrade, having a relative humidity 85%, that fast losing its moisture outside. So a drainage system, in most of the air conditioning system, a drainage pipe is given to dehumidify the air, because by cooling itself it gets saturated and the excess moisture content within that temperature would be lost and coming out. So humidity is one of the biggest culprit for this comfort level, and we have to deal with that. Now physiological factors are what? First is metabolic rate and second is clothing. What is metabolic rate?
metabolic rate is actually, it is given the unit of watt per square meter. Oh, watt per square meter. It is actually it defined in building physics as MET, MET, unit as MET. When you are playing basketball in an indoor Okay. 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 So that metabolic rate is your activity level. You are playing, you are sleeping, you are sitting, watching the TV. You are expending minimum heat to the area. So that is the MET level. So the comfort level would not be same in a room having certain temperature, sitting and observing TV or reading newspaper, or you are doing some brain work, writing some article, etc. So activity wise, your design would be different. Second is clothing. Clothing is also an important thing. It has an unit of clo in building physics. The clo is that when we are feeling cold, we are putting a wrapper, a sweater. So we are just nothing. We are doing, giving some insulation over our body so that our inner heat could be kept inside and gives us the comfort level. So that is the thing. Next is physical factors. All these slides, actually I am taking time to present the slides, but the slides are immaterial. I am giving you all the information just in that slide. Air temperature, mean radiant temperature, asymmetry, floor surface temperature, relative humidity, air speed, all these have already explained how all these affect our comfort level and how to mitigate and design our buildings to have a minimum, optimum comfort level of having consideration of these parameters. So this is also I have already given. Now clothing level, I told that when you are having a basketball or indoor badminton, and when you are just reading newspaper, those two activities are different. Your temperature band would be different. Your design system would be different. So comfort, to having comfort at that activity is very specific. So activity is one of the important factor for your comfort. Now these are the things that clothing, it has a unit clo. When with t-shirt, shorts, it is 0.3 only. When you are in a full trouser, vest, jacket, it is 1.5. And one is jacket, blouse, long skirt, stockings. It is clo unit 1. So activity wise also, seated relaxed 1 and standing medium activity 2, if it is a basketball going to 2.5 to 3. Now two of the thermal indices, just now we are coming to how to measure the comfort level. Thermal indices, effective temperature, tropical summer index. These two are the indices. Just like with these, I think many of you know Sensex level, that today Sensex is at 19,000. Today Sensex is that. So these are a kind of indices you need to deal with designing the your indoor unit. Effective temperature, there were two scales, basic scale, normal scale of effective temperature. In the basic scale, referred to main strip to waist and called the basic scale your comfort feeling. It is again a subjective thing. You are giving your vote, giving your comfort satisfaction level, and on the basis of that satisfaction level, it is graphically plotted and gives from a survey of maximum number of people that yes, we are comfortable. It could be like that there are 50 persons sitting here. We are going to each and everybody with a checklist and ask them, fill the checklist. How much comfort you are feeling? Having a slight chill, having a slight hot,
So all of you, after getting all the data, we can prepare a subjective analysis of these people. So second is normal scale of effective temperature. The other so fully clad in indoor clothing and called the normal scale of effective temperature. With this, we can derive another scale of measurement, subjective analysis. Now, with these, definitely different people would be giving different feedback. On the basis of that, we have some statistical tool. Many of the statistics who knows about statistics have dealt with correlation regression. So correlation regression have a with a set of people with ethnicity, with these clothes and all these gender, we can have some comfort parameters developed. And these comfort indices are based on those statistical tools called correlation regression. Now, another type of index, it is tropical summer index, wet bulb temperature, globe temperature, air speed. So, there are two types of temperature in thermodynamics we are dealing with. One is a dry bulb temperature, one is wet bulb temperature. Dry bulb temperature is actually the ambient temperature, the global temperature. But what is wet bulb temperature? When your thermometer bulb is covered with a moist, normal ambient water moist with a just a piece of cotton or something, so that it gives you a different temperature. So wet bulb temperature is very important doing your designing at the time of your air conditioning system, and different humidity levels of that particular city. So city to city, your air conditioning system design would be different, and these tropical summer index are based on these three parameters. Again, the range of environmental condition, TSI covered in this study, globe temperature, wet bulb temperature, air speed, and this index, tropical summer index. On the basis of that, this comfort index, thermal comfort index, also developed. Just another thing I couldn't find here, that percent mean voting, PMV. PMV is a very important tool. Just in our green building, existing building certification, we want to have that voting system. We are going to 1,000 occupants and giving them a checklist to fill this up. Their age, how, their gender, everything. From there, we want to ask whether you feel comfortable in last 6 months in your office, thermally. Is it bit cold or bit hot? How is your feeling? So on the basis of that, we develop that this temperature or this office space with that specific temperature as well as humidity level, the most people are satisfied or not. That is another index. It is called PMV, percent mean voting. Now method to find thermal comfort. PMV, I have just told, PMV, PPD methods and local thermal discomfort. A local thermal discomfort, radiant temperature asymmetry, draft and floor surface temperature. Now PPD, PMV method, all these statistical method, how many people are surveyed and their characteristics and how they are responding to the questionnaire. And on the basis of that, these PMV and PPD are developed. Now, there are scale. One is extreme cold, cool, slightly cool, neutral condition, and extremely hot. On the basis, on this scale, it is asked that what is your comfort level? I think many of you know you are given that voting from the bank that
0 to 5 scale, what would you be liking to give us the rating? Then you did a satisfactory, a completely dissatisfactory. On the basis, this is also a kind of scale. This radiant temperature, asymmetry, draft, floor surface temperature, all these things. These are discomfort, particularly it is dealing with not comfort but discomfort level, and how this discomfort level developed, that radiant temperature, asymmetry, draft and floor surface temperature. In the colder places, just like Europe, people are mostly relating their discomfort with the floor surface temperature. They cannot, most of the places are even being wooden flooring, they cannot, without having a sleeper, they cannot walk over their floor. So that is the thing, floor surface temperature and other different wall, roof, the different surface radiant temperature gives the feeling of comfort. Just coming to the same thing, the comfort level, how it is measured, the predicted percentage dissatisfied, predicted mean vote and drought risk. On the basis of all this survey-based statistical tool, we generally reach a comfort level band that within this temperature of this city, these would be the comfort level. You can design your building within having consideration of this temperature band. Measure to improve thermal comfort. Now coming directly to the architectural design. Shading and glazing, controlled ventilation, insulation, cool roof, green roof. I am just over this thing. I am just, I do not going to the next slide. I am starting from here. Shading and glazing. Look, we have to have our buildings in a preferable orientation. We know that east and west gives you almost horizontal type of radiation from sun. So if you can design, if you can orient your building in the north-south long walls, east-west small walls, then your direct glare would not be coming within your space. And we know that light is a electromagnetic wave, the same as energy. Energy and light is a form of energy. So if we want to have sufficient daylight to reduce artificial lighting, we have to allow some part of heat also within the space. But if we get maximum, a maximum glare-free light within our space, our cooling load of the area or comfort level would be better. Cooling load lower, comfort level better. So doing this, we have to create a good orientation, then shading over the envelope. And that shading could be horizontal as well as vertical. Horizontal shading is most preferred in the southern direction, southern orientation of the building, because that time sun goes up. And from there, if it trying to enter directly from within your space through the window, then horizontal shading would restrict that. And in the east and west orientation, vertical shading fins would be most effective. Like now coming to the point of glazing, earlier we used tinted glass, then we started with clear glass. Clear glass gives us better connectivity, very good visibility, very good daylight within our space, but clear glass also allows a good amount of heat energy within the space. So now this glazing industry is revolutionized with certain types of glass.
that is called low E glass or solar control glass. This solar control glass acts like barrier to the infrared part of the light and allow the visible daylight. So glazing is an important part. Next is ventilation, that is controlled ventilation in the hot and dry area. With the hot air, your comfort level disturbed in a naturally ventilated building. In Gujarat, Rajasthan, in the big houses have thick walls, very little numbers of windows and opening, because they allow minimum ventilation within the space. Most of the air is hot, so minimum amount of hot air coming into the space. So controlled ventilation plays an important role. And in our earlier presentations, we have heard of mud, thatched roof, mud wall. These are nothing but insulated type of things. Insulated means their overall U value in the mud with some natural ingredient like cow dung, etc. is very good. So that is one part. And then cool roof. Cool roof is a kind of thing. Cool roof allows minimum solar absorptance and maximum reflectance. So cool roof would be giving you heat ingress from the roof. And lastly, green roofs. It is a live vegetated roof. If you allow your horizontal means zero slope roof into converting into a green roof, then it automatically reduces your heat load within the space. Now I have almost completed the shading, glazing, ventilation, and these types of, it is a bit different. Single-sided ventilation, cross ventilation, and stack ventilation. If we have a one-side window only, it is called single-sided. If we have different walls have different side walls have windows, then from one end it enters and another end it goes out. So it gives better airflow speed within the space. And stack ventilation, generally designed in the Havelis, where inner courtyard is developed, and from that inner courtyard hot air going up and all the places getting more air as well as low temperature. So your comfort level would increase. So all these slides actually gives you these types of different types of case studies. Natural ventilation, I have already told. Heat conduction, roof wall windows. These are actually would be, it is a long subject. It is almost these building physics and all these things takes a more than 2-hour session to give you the overall subject details, but I don't have that much time. So these are the thing. The cool roof, these right one 80% reflected is cool roof. In your conventional brown colored roof, or just only 5% reflected, it is the thing. So we need to adopt this technology even in affordable housing, because cool roof, to create cool roof, you may not expend a good amount. It is 50 to 65 rupees per square feet. In a mass housing, it is very little. So you can have that. And other as thermal performance of the blocks of the entire building. We generally call it heat island effect. So if we want to reduce our heat ingress or overall area temperature, then we have to adopt or want to mitigate these heat island effect within our buildings. So these are the thing, green roofs purpose and all. Reduction of energy use, important feature of green roofing. And all these, I have already told that climate zone level, site level, block level, unit level, these are the passive measures. Passive measures, orientation, shading,
your wall thickness, so that time lag is allowed to heat to come within the space. So these are the passive strategies of building physics. And these are the vernacular type of thing, why Kerala have sloped roof, thatched roof, why the Havelis have lower number of window wall ratio and inner courtyard. All these things are taken into consideration. So almost everything I have completed, whatever I had to tell to you. Maybe there are another trainers, he would be giving more insight into the subject, and I'd be again coming in the ENS session. Then at that time I want to complete the remaining part of the these my deliberations. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you for the speedy presentation. Now I would like to invite CN Jha ji. He is MTech from IIT Delhi and working with BMTPC for more than 20 years. And he has been involved in the ideation and formulation of GHTC. So he has been the integral part of the Lighthouse project and conceptualization since the inception. So I would just share his presentation. So I am CN Jha, working as Deputy Chief at the BMTPC. And BMTPC is involved with the ministry since start of its housing program, like starting from 2000, early 2000, with Valmiki Ambedkar Awas Yojana. Then there was Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission, this Rajiv Awas Yojana and Pradhan Mantri Awas Yojana, the current program. And even we were very closely working with our ministry in conceptualization of this GHTC India. I will give the brief background of this Global Housing Technology Challenge. It was basically, with all this, like our previous speakers have already told, that we need sustainable and innovative technologies to bring, to address to this climate change and this global warming, these things, and address to resource scarcity also. So with these idea and background, the Ministry of Housing and Urban Affairs, they organized Global Housing Technology Challenge to invite from across the globe the innovative and alternate technologies which have been successfully demonstrated in its actual construction in any part of the world, to bring a paradigm shift or a shift towards this sustainable technologies. Is it like there? Okay. So building sector is very big contributor to this climate change, like in terms of energy. It uses as it has been mentioned also, that up to 30% of the energy, 30% of the fresh water,
and this about 40% of the total waste. And what a sustainable technology can result is almost reduction by 50% of this total energy, water, and elimination of total waste in the construction. So with these ideas and all, so this Global Housing Technology Challenge was organized, and 54 technologies, innovative technologies were shortlisted. They were put in 6 broad categories. So I will first cover here briefly the technology which is being used in this LHP Ranchi, and if time permits, so I will cover the technologies used in other lighthouse projects also. So these are the aspects I am going to cover. So these are the 6 broad categories of technologies. The first one is precast concrete construction system, 3D precast volumetric, which is being adopted here in Ranchi. And other systems are like 2D, this precast construction system, which is wherein the components are manufactured in the casting yard and assembled in situ at the project site. Light gauge steel structural system and this pre-engineered steel structural system. Basically, these are steel structural system which are this built-up sections or this light gauge structural systems. Prefabricated sandwich panel system, monolithic concrete construction, and a stay-in-place formwork system. So these give you the brief of or summary of all 6 lighthouse projects being implemented at 6 different places. And the red one is, you see the attribute of this lighthouse project at Ranchi here. This is G+8 and carpet area is 29.85. So this is the project layout. Right hand side, you see there are 7 blocks with G+8 configuration. And this is a typical floor plan. You can see there are 2 staircases and lifts catering to the 16 units. Means 1 staircase and lift is catering to 8 units, and so there are provision for two staircase and lifts. All the room size are fulfilling the NBC requirement of minimum area, and as per NBC, the EWS unit should have minimum 25 square meter of carpet area. This is comfortably exceeding that, and the carpet area is 29.85. And the project has many green features, like it need to be this green rating as per Griha. This 3-star rating is like it has to achieve as per the tender this requirement. Use of renewable resources, rainwater harvesting, solar lighting, though a part of the conventional lighting only. Solid waste management, STP, with recycling of wastewater, and this fire fighting system as per the requirement of high-rise building. How many of you were there the previous day lecture? आप में से कितने लोग थे? काफी लोग थे. So, the system which is presently in vogue is the load-bearing structure and RCC framed structure. And against that, the technology which is being proposed here is like 3D volumetric construction as being implemented in Ranchi. So, what is the difference? We talk of RCC framed structure only because this of late, this has become like more prevalent, because nowadays you will not see any more the load-bearing structures. So in this RCC framed structure, these are multi-stage, multi-phase construction. Like you first start with this foundation, then you put the formwork for this one columns and beams, slab, and do the concreting. Then you make the walling, that is of like fly ash bricks or AAC blocks or concrete blocks.
So these are the multi-phase construction, this sequence is there. Instead of this, you see in the casting yard, entire this 3D structural module, which is in a form of a room or a toilet and a combination of these. So these are casted in the casting yard and they are simply transported to this project layout area and lifted, installed and integrated together. So you can imagine the time, like the speed with which these construction can take place instead of like multi-phase, stage construction. So now I will cover the components, structural components of this is, one is foundation, substructure and the superstructure. Superstructure comprising of these 3D modules, but here, like in this one, the Ranchi project, all the modules are not the 3D volumetric modules. The kitchen is coming as like all 4 walls, base slab, and over which like base slab is just getting connected, and the kitchen components are like being put one over the other. Similar is the case with the toilet and bath pod. 3D, all 4 walls is coming and then they are being put one over the other. But other components are 2D only, like this walling component is coming and then pre-stressed slab is coming. Why pre-stressed slab? Because of the proximity to the airport, they had some height restrictions. So pre-stressed slab is like giving slightly thinner this section. With slightly thinner section, this pre-stressed slab can be designed, and that is why this has been adopted. Foundation system is like conventional only, like based on geotechnical this investigation and water table and other parameters. So this has been designed. There is raft in the base, and then RCC shear wall is coming. RCC shear wall you can see after the raft has been cast, and then this grade slab, like the slab is coming on these openings. After that, starts the superstructure system. In the superstructure system, as I told you, that kitchen pods, this is the kitchen pod. So this kitchen pod, like you will come to that site also. So this kitchen pod is being manufactured using this 3-dimensional this molds, which is made of high strength steel. And while making, so we have to put this all electrical plumbing lines setting up. We have to do block out the doors and windows because we have to pour the concrete. So what we need to do is, like wherever opening is there for doors and windows, so we need to block out these places. Like we have to put closing these panels so that concrete doesn't come out. So after putting all these blockouts, the pods are cast into their final shape, meeting a dimensional requirement and all. What is the difference between like in situ construction and what we do in the casting yard? So we have very strict quality checks. We have this PLC, like programmable, like logic control system, like all the raw materials are accurately weighed, they are mixed, and we have very good control of this water cement ratio. Like in concrete, if you are civil engineers, then you would be knowing that for concrete, the recommended water cement ratio is this 0.32. But what we see in the normal construction at site, that there is no much control over this water cement ratio. They go up to like 0.4, 0.5, and that brings all the durability and quality issue in the concrete structure. So if we adopt a very, maintain a very good quality, this control on this water cement ratio, we ensure the durability and high quality of the concrete. So this was the 3D pod. So you can see all 4 sides, the molds are there, and on the top,
this is being put, and over the top the concreting would be done. These are the like molds for two-dimensional components like a gable wall end and walls and a pre-stressed slab also. So you can see the molds, various molds. We can visit this one construction site also, and visit the casting yard where all these things are displayed. Top view of this kitchen and bath pod, which have been just taken out of the mold. Various components being produced, being this one green concrete you can see here on the right hand side. So advantages of the system. Lot of things have been discussed about the sustainability also. So I will cover the sustainability aspect also while giving the advantages. Up to 90% of the building work, including finishing, is complete in plant, casting yard, bringing significant reduction in construction and occupancy time. Why up to 90%? Though here at site, because of some this space constraint, so they are not putting the kitchen pod, they don't have the space to keep the kitchen pod, so they are not finishing the pods completely. So they have to bring it and simply install at at their location. They don't have the space for the storage. Otherwise, they could have put the tiles and everything, and even like sink, everything, and then they could have brought to the one over the other, they could have put. But because of the space constraint, they are not able to do the complete finishing part. Because then the controlled factory environment brings resource optimization, improved quality, precision, and finish. Like molds are very accurately fabricated. So it's not that they are so accurate right from the beginning. So they have to do certain trial production also. In the trial production, they see is there any variation in the thickness, left side, right side, from the top they will measure. And once they have stabilized, they need to do some working on molds also. Once they stabilize, then after it starts this manufacturing or producing this precise, if 120 mm is the requirement, so it will not produce anything like 2 mm this sort also. It will stick to that accuracy only. So controlled factory condition brings resource efficiency, resource optimization. Then one more thing, one sustainable thing which I would like to highlight here, that in this concrete, you can add this cementitious materials, which is fly ash, blast furnace slag. Here, blast furnace slag based cement is being used. And the content of blast furnace slag is up to 50%. So we can imagine that 50% of the lime resources is being conserved, and there's a 50% of blast furnace slag, which is byproduct of the steel plant. So this is being utilized here. And it is favorable to the concrete, as it brings better workability and long-term durability of the concrete. It has a very smooth surface, so you can eliminate the entire plastering. So there also you can imagine the resource saving of the plastering material and the amount of labor and time involved in doing the plastering work. Once we are producing this monolithic components, so there are less joints at site, and we can eliminate the chances of leakages in this 3D modules. System has minimal wastage, and at site the dust pollution you will not find, because everything is covered. All the raw materials comes in the closed containers and all, so there is no chances of any dust pollution at the site. Use of optimum quantity of water through recycling. The same water can be recirculated, which is being used for the curing purpose of the casted components. So bringing this water, recycling also. Scaffolding, shuttering requirements are also minimal, and you can have all weather construction and better site organization.
there are certain limitations also, like a space constraint I told you, because apart from the project area, you need to have a space for the casting, casting yard. And setting off of casting yard, if you see, so it takes time. It takes time in months. So, but the advantage is like once you are working on the casting yard, to same time you can parallelly start the foundation work also. So that is the advantage with this system. Like if you do the construction using casting yard. Approach road should be there because very heavy cranes and so they reach site. So you need to have proper approach road. So proper this one like space for functioning of this tower cranes you might have seen at the site. So functioning of tower cranes you need to have proper space and skilled this monitoring is required and so that like all the connections are getting properly tied up or not, so that needs to be ensured. So strict supervision is required in the working. Plumbing and electrical services need to be pre-planned because once the concrete has been cast, so after that you, if it is concealed piping and all, conduiting, so you cannot make much changes. You will have to then put from outside only. Then the design considerations. So design considerations, I will not go in much details. So bearing capacity was 18 ton per meter square at a depth of 2 meter. And wind speed is also not very high here in Ranchi. So it is, this basic wind speed is 39 meter per second only. And that wind speed gets converted into the horizontal force and all. So there are adequate Indian standards so to take care of those loads. Similarly, we are in this, the earthquake zone here is zone 2, one of the this lowest damage, this risk zone. This earthquake zone is there are 4 zones starting from zone 2 to zone 5, all our northeastern areas and all. So they fall in zone 5, part of Jammu and Kashmir. But here it is the lowest risk category zone, which is zone 2. Loading, this one, load combinations, so it has been duly taken care of. This system has been weighted by by IIT Bombay, and so all the weighting as regards there should not be any apprehension about use of this new technology. The construction sequence, so construction sequence we can just see, and because of the time constraint, so okay. Making the design foundation of the building ready while manufacturing of precast component structure modules are taking place at the factory. Building units moduled are installed at site with the help of tower cranes. Then this sequencing, so we will see in the animation also subsequently. So this is the raft foundation of all the building blocks. All the 7 building blocks are similar in nature. So that advantage is there. So raft is 700 mm raft is there. After that, from the raft, shear wall is coming. Shear wall is 160 mm thick. So this is the cross section of this raft and shear wall. You can see the foundation. This is the grade of concrete for different components. Raft foundation, precast shear wall, it is all M30 grade. Precast, pre-stressed, this one, solid slab is M50. Then structural screed is M35. And all the steel reinforcement is high strength, and TMT bars of 500 mm per this Newton per mm square. And for pre-stressing, this we are using this strands, which is 1860 Newton per mm square strength. Concrete mixed design, so it is Portland slag cement is being used here, and the water cement ratio which has been kept in the design is 0.35, and it is producing this sustainable concrete because of the use of this slag in this as 50% of the replacement of the OPC. This is the batching plant which is there at site.
batching pump. This plant is PLC controlled, so you need you get the printout of like what all raw materials in what proportion and what water cement ratio. So every time of every batch, you have a printed report also. So this is the actual picture of this one excavation. Then there is PCC. Foundation work, then PCC. Raft reinforcement laying here. Similarly here, then half of the portion have, the concrete has been casted. Total casting has taken place. Reinforcement you see projecting out. This is for shear wall. Here shear wall will be coming. This starter for the shear wall. These are starters. Then this formwork for the shear wall. This is all conventional. After that you see de-shuttering. This shear wall de-shuttering is taking place here. This is like plinth level framing plan. So plinth level framing plan, like it will be clear from the next slide. So these are like joint details. So joint details, it will be clear once you come for the site visit, but it is getting connected through dowel bars, like here. In this picture you can see. This picture here, like this reinforcement is coming from this place, and it is getting projected outside. And here there is a coupler, steel coupler. From the bottom, grout is injected, and it comes out from the upper upper tube. So this fills the grout within this, and the continuity of the reinforcement is maintained from the bottom to this one top level. So these are all connections, but it will be more clear. Like again, you see the couplers here, which is like the couplers and reinforcement from the bottom. One and some reinforcement from the bottom is also going to this floor slab also. Floor slab, because two types of connections are there. One are the 3D components, entire 3D, and some are like this walling, and this pre-stressed slab is also coming. So this is slab, pre-stressed slab. So the reinforcement coming from the bottom, one goes to the screed here. In the screed, which is like on the top of this pre-stressed slab, and joints, which also joins all the components together, and some reinforcement through these couplers. So this gets like, and this helps in this reinforcement continuity to the upper floors. This is like, these are the kitchen pods and these are the toilet pods. So you see the sort of 4 DUs are here. So there are 4 set of this one pods. Then comes like the 2D components along the corridor and this other places also. Next one is the slab is coming on the top, and then again repetition. Okay, just this will be like, this is the sequence. Then comes the 2D, upper floors, and the repetition. So I will just skip this. So these are the pods. The 3D components, some are 2D components, matlab walling and slab, like this you see along the corridor or along the end of this one building units. So these are coming with holes and dowels projecting from it. Like the larger dia will go to the upper this one, upper this wall, and the small dia 8 mm will be bent, and it will be it will go to the screed for the slab purpose, and joint with this one slab.
So I had one more presentation also, but this now with the discussion in the morning and also it is clear that these lighthouse projects is not just merely the construction of building units. It has a different purpose. It has a purpose like we all need to this one we all need to go to we all need to shift to new this era of innovative technologies and sustainable technologies. And how we will achieve this through like a visit to these LHP projects, through like ministry is taking so many initiatives in this one, creating awareness about these lighthouse projects. They are live streaming all the 6 lighthouse projects on its website like GSTC India. So you can see the daily production, progress of those 6 projects, multi-stake this consultation and all. So these are all aimed to bring a transition, this technology transition. So that is more important aspect of these lighthouse projects, and we all need to commit that we will be the change agent in our area of this profession, that we will bring the new technologies, we will work for it, we will learn these technologies, we will understand, explore, then help in large scale replication of these technologies. So that is the real objective of these lighthouse projects. Okay. So with this, I conclude. Thanks a lot. Thank you very much for enlightening us with what all is happening just 2 kilometers from here, and we will definitely go there and see on our own. So without wasting any time, let's have some snacks, some lunch. Then we'll be back in like 15 minutes and then proceed further for the other sessions. I hope it's okay. 15 minutes. Let's confine it within 15 minutes. You may please proceed for lunch because it's already 2. Hello everyone. So those guys who have not received lunch coupons can please come here and assemble. We'll arrange something for you. जिनके पास lunch coupon है, you please go and hand over the lunch coupon to the catering staff. वो वापस नहीं करेंगे, इस बार ले लेंगे.
Another request, those who have not submitted their feedback forms, आप अपने चेयर पे ही रखेंगे, हमारे volunteers जाके collect कर लेंगे. ये kindly original All DMA staffs are requested to go to the first floor DMA office. आप लोग का lunch वहीं पे है.
शांतनु शांतनु, यहाँ पे लाइन में रोक के रखा हूँ, उन लोग को यहाँ से लाइन में लगा दीजिए। जाइए, हम लोग भी सिविलाइज। आर यू अवेयर कि वो चाहते हैं? हाँ जी।
Let's join back for the next session. I would request all our participants to be back in the auditorium so that we can proceed with the session. It's already 2:45. We have had our lunch for 45 minutes now. Could you please join in and we'll start with the next session. So I would like to invite Mr. Kumar Viplab. He is the energy engineer and has more than 12 years of experience in the project management, energy audits, retro commissioning works, site execution, technical delivery, licensing and coordinating with clients, vendors and consultants. He has a vast experience in working with advanced technologies, including the combined heat and power, district heating and cooling, thermal energy storage, geothermal heating and cooling systems. He is certified IBBI registered valuer, lead AP O&M, BEE ECBC master trainer, edge expert, and the list goes on. He has been the master trainer for more than 48 trainings on ECBC. So I would like to invite Viplab ji. Okay, I think लंच से पहले हम लोग बोल रहे थे कि सेकंड सेशन हमेशा मेरे को मिलता है. अब ऐसा क्यों? अब ये आप लोग बताएंगे अभी. अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे अब तो एसी ऑलमोस्ट हर जगह हम लोग सब घर में एसी लगा ही रहे हैं. एक क्वेश्चन मैं आप ऑडियंस से पूछना चाहूँगा इनफैक्ट कि आप एसी कितने डिग्री सेल्सियस पे चलाते हैं, क्या टेम्परेचर रखते हैं? 20, 22, ओके. अच्छा, कोई 20 से कम? 18? उधर हाथ खड़े हुए. अच्छा, तो आपका एसी कितना साल पुराना है अगर 18 पे चला रहे हैं? एकदम नया है क्या? ओ भाई साहब, तो आप इधर क्यों है? आपको तो यूएस पे होना चाहिए. तो थर्मल कंफर्ट बोलते हैं ना कि हम लोग वी कैन, मतलब आप बाहर जाएंगे, जैसे आप शुरू आए, एसी चल नहीं रहा था, ठीक है, फिर भी आप बैठे हुए थे, ठीक है, तो वी आर मोर कंफर्टेबल एट हायर टेम्परेचर्स ऑल्सो. तो अब ये अगर 18 बोल रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है. ओके, ठीक है. अब और एक चीज, किसी को अगर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी क्या टेम्परेचर रिकमेंड करता है, क्या आप कोई जानते? कोई बता पाएगा? 24, 26, ठीक है, चलिए, एक ये हो गया. अब मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूंगा आपसे, क्या आपको सीलिंग फैन चलाना चाहिए एसी के साथ, हाँ या ना? कितने लोग नो बोल रहे हैं? हाथ खड़े करें. ओके, और बाकी सब हाँ में कम हुए, मतलब बाकी सब अनडिसाइडेड है, नोटा का वोट देंगे सब.
ठीक है, अब जितने लोग ना बोल रहे हैं क्यों, कोई भी एक, इनफैक्ट मैं नीचे भी आ सकता हूं, अगर दूसरा माइक है तो प्रॉब्ली आई थिंक कोई भी बोल सकता है क्यों, अगर आप नो बोल रहे हैं क्यों? फैन चलने से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ओके ठीक है, चलिए ये एक रख लेते हैं। और कोई तर्क वितर्क? कन्वेक्शन फ्लो थोड़ा डिस्टर्ब होता है, चलिए ठीक है, ये और एक हो गया। और कोई? सॉरी, ज्यादा ठंडी, ओके, तो इसके लिए अच्छा ये पॉइंट बढ़िया है, ज्यादा ठंडी लगेगी इसीलिए पंखा नहीं चलाना चाहिए। तो आप टेम्परेचर कितने पे रखते हैं? 30? अरे वाह, अरे बहुत, मैडम आपने तो बहुत सारी एनर्जी बचा ली है इंडिया के लिए। अब इन्होंने जो बोला 30 डिग्री सेल्सियस एसी चल रहा है और साथ में पंखा चला रहे हैं, ठीक है, इनफैक्ट नहीं चला रहे, सॉरी करेक्शन, वो पंखा भी नहीं चला रहे, अच्छा एसी भी नहीं चला रहे, ओके, तो एसी आपने बस ऐसे ही स्टैंड बाय रख लिया, ठीक है, ओके ठीक है। इनफैक्ट कई सारी जगह ना स्टैंड बाय पे होता है, स्टैंड बाय का मतलब ये होता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन रखा है बस। इनफैक्ट जैसे इस ऑडिटोरियम में आप अगर बेसमेंट में कभी जाएंगे, चिलर बेस चिलर्स हैं तो 1+1 मिलेगा आपको, एक वर्किंग एक स्टैंड बाय। तो ये स्टैंड बाय मतलब कुछ भी, आप होटल्स में भी जाएंगे, आप शॉपिंग मॉल्स में जाएंगे, कहीं अगर आप गलती से भी कहीं पर चले जाएंगे, पूछेंगे भाई एसी का सिस्टम दिखा दो, तो हमेशा +1 एक मिलेगा, मतलब कि अगर कुछ खराब हो जाता है तो और एक चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम थर्मल कंफर्ट से कैसे रिलेट कर रहे हैं, देखिए होता यह है कि सबसे पहली चीज, जो पंखा जब घूमता है तो वो क्या होता है, एयर सर्कुलेशन बढ़ाता है। अब जैसे कि हमने आज सुबह कई बार पढ़ा कि इनफैक्ट सुना, एयर मूवमेंट इज क्रिटिकल, ठीक है। तो इनफैक्ट शाम में आप जब बाहर जाते हैं, लेट्स से आप जब बाहर जाते हैं शाम में, ठंडी हवा चलती है, ठीक है, हवा की ज्यादा स्पीड लगती है, तब आपको अच्छा और लगता है, ठीक है। तो वही सेम चीज आपके घर में भी हो रहा है। तो आप अगर 26 डिग्री पे चलाएंगे, ठीक है, और पंखा नॉट फुल स्पीड, मीडियम स्पीड पे चलाएंगे, आप एक तो थर्मली कंफर्टेबल रहेंगे और साथ में आप एनर्जी भी बचाएंगे, क्योंकि हर 1 डिग्री सेल्सियस से आप नॉट ओनली बिजली बचा रहे हैं बट आप ग्लोबल वार्मिंग से भी बचा रहे हैं। क्योंकि हर बार आप देखिए क्या होता है, घर में आपका 6 महीने एक साल में रेफ्रिजरेंट तो आपका सर्विसिंग के लिए बुलाते हैं और वो बोलता है मैं तो लूंगा 800 रुपए आपका रेफ्रिजरेंट भरने के लिए, बिल्कुल। तो ये रेफ्रिजरेंट क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, और खासकर स्प्लिट एसी में आजकल हर जगह स्प्लिट एसी लग रहे हैं। आप पुराने विंडो एसी में चले जाइए जो आजकल बनना ही बंद हो गए हैं, वहां पर रेफ्रिजरेंट चार्ज मतलब वो आ जाएगा टेक्नीशियन, बोलेगा ठीक है सब बस थोड़ा बहुत साफ करके चला जाएगा, लेकिन रेफ्रिजरेंट चार्ज नहीं, क्योंकि उसमें लीकेज, क्योंकि वो एक क्लोज्ड सिस्टम होता है, वहां पर कोई भी बोल्ट्स वगैरह कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थर्मल कंफर्ट समझने के लिए। और इससे भी बढ़िया आप जब ट्रेन में सफर कर रहे होंगे, अगर आपने उधर थोड़ा आर्किटेक्चर देखा होगा, आपको इनफैक्ट जो स्लीपर क्लास में जो खिड़की होती है उसमें मेटल वाली क्या होता है, स्लॉट्स होता है उसमें, देखिए साइड में। अब वो किस लिए दिया जाता है, वो ये होता है एयर मूवमेंट होते रहे। तो अब ये जो हम आजकल पढ़ रहे हैं और ये जो इन्होंने क्या कहते हैं स्टैंडर्ड्स वगैरह बना दिए हैं, ये सब तो हम एक थ्योरी को हम एक्चुअली जो प्रैक्टिकल चला था उसको हम थ्योरी में ला रहे हैं, प्रैक्टिकली हमें ऑलरेडी नॉलेज थी, ये रियलिटी है। तो बस हम आज के जमाने में बस पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये बस छोटी छोटी चीजें हैं जो बस कोरिलेट करनी होती हैं और समझना होता है, और थर्मल कंफर्ट इज कंप्लीटली अंडर योर कंट्रोल। तो अब हम थोड़ी सी चीजें अब टेक्निकल थोड़ा सा देख लेते हैं, आई मीन थियोरिकल।
तो ये जैसे देख सकते हैं ASHRAE 55, ये अराउंड 1960s में पहली बार ये स्टैंडर्ड रिलीज हुआ था जो स्पेसिफिकली थर्मल कंफर्ट के बारे में बोलता है. ASHRAE 55 इज अमेरिकन सोसाइटी फॉर हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स. तो वो मोस्टली एयर कंडीशन बिल्डिंग्स के लिए बना हुआ है. और NBC, इनफैक्ट NBC एक इतना बढ़िया कोड है कि उसमें भी उन्होंने एक चार्ट दिया रखा है जिसमें आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एंड एयर वेलोसिटी, ये तीन को एक ही चार्ट में कोरिलेट कर लेता है. तो जैसे मैं कह रहा था ना AC का, तो यू वुडंट बिलीव 33 डिग्री सेल्सियस में आप अगर अराउंड 1 मीटर या 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी देंगे, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड. अब जैसे यहाँ से आपका हिट कर रहा है ये ग्रिल से, ये अप्रॉक्सीमेट आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड है. इससे ज़्यादा अगर जाएगा तो आप डिस्कम्फर्ट थोड़ा फील करने लगोगे. आपका जो सीलिंग फैन है उसमें भी अप्रॉक्सीमेट आपका वही 1 मीटर के आसपास पर सेकेंड मैक्सिमम तक ले जा सकते हैं. उसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. मतलब उसमें क्या होता है, फिर आपके मैकेनिकली प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं. और एकोनिमास संहिता एंड ISHRAE, ये सब जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं. इवन ISO भी उसी ASHRAE 55 को लेकर के बना हुआ है. तो जैसा कि हम बोल रहे थे, एयर ह्यूमिडिटी, ये सारा हम सुबह से सुन रहे हैं. अच्छा, एक क्वेश्चन जैसे याद आया, ट्रेन्स में, क्या ट्रेन्स में आप लोगों को सब पता है ना, इंसुलेशन तो हम के बारे में पता ही होगा, तो क्या ट्रेन्स की छत पे इंसुलेशन रहता है या नहीं रहता है? ट्रेन्स के रूफ पे क्या इंसुलेशन रहता है? अंदाजे से आप गेस करिए. आपको कितनी, आप बाहर कितना टेम्परेचर होगा और अंदर कितना आप टेम्परेचर फील करते हैं? AC छोड़ दीजिए, मैं AC कंपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल. नहीं रहता. ओके, ठीक है. आप एक बार गूगल सर्च करिए आराम से. आज के डेट में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए गूगल पे आराम से मिल जाएगी. इनफैक्ट आप सभी लोग जाकर के सर्च कर सकते हैं. उसमें छत पे पतला सा 75 mm का इंसुलेशन दिया जाता है. वरना वो ना दें तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये मेटल है. आप समझिए मेटल है, छत पूरी मेटल है. और 45 डिग्री अगर हर मिनट पे आपका 45 ही है बाहर पूरा, ठीक है. अब क्या हो रहा है कि वो जितनी भी गर्मी है वो अंदर आते जा रही है, कंटिन्यूसली आपकी गर्मी अंदर आते जा रही है. तो आप मतलब आप समझ लो कितना हो जाएगा अंदर टेम्परेचर. मतलब आप एक डब्बा बंद कर दो, आप एक जैसे ब्लैक बॉक्स होता है ना, जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बिल्कुल ओवन, एकदम ओवन की तरह हो जाएगा. जी हाँ 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 हाँ, तो वो और भी ज्यादा गर्म हो सकते हैं. वो दे दीजिए मेरे को, ये मेरे को दे दीजिए और ये उधर रखिए, उल्टा कर दीजिए. माय क्वेश्चन इज कि स्लीपर क्लास के डब्बे जी कितने गर्म, अगर थर्मल इंसुलेशन किए हुए हैं तो इतने गर्म क्यों होते हैं? तो उसमें देखिए, अब मैं वही कह रहा हूँ, ओवन में आपका गर्मी रिलेटिव है. अब अगर एक बंद कमरे में, ठीक है, आप गर्मी कंटिन्यूस डालते जाएंगे तो वो 75-80 तक पहुंच सकता है, 80 डिग्री सेल्सियस. अब आपका मेंटेन हो रहा है जो अराउंड 40-45 के आसपास मेंटेन हो रहा है. मतलब ये आप अगर टेस्ट करेंगे, इफ इट इज 40 to 45 तो वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो फिर फायदा क्या हो इंसुलेशन देने का? तो अब वही है ना, आप अगर आप 70 में, अगर 70 रह जाएगा, आप सोचिए ना, अगर 70 रह जाएगा तो इट इज कंप्लीटली अनकंफर्टेबल. ठीक है, तो अब एटलीस्ट कुछ हद तक कम किया हुआ है. अब देखिए, ज्यादातर ये मैं एकदम पीक कंडीशंस के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, 40-45 आइडियली अराउंड वो भी 1-2 घंटे के लिए होता है, ठीक है. और क्योंकि मूविंग ट्रेन है, आपका एयर वेलोसिटी भी रहती है उसमें अलग से, ठीक है. तो वो जो थर्मल कंफर्ट, अब उसमें आप एयर वेलोसिटी भी ऐड करिए, 40-45, ठीक है, प्लस आपका एयर वेलोसिटी जो आपका हिट कर रहा है, ठीक है. तो उसमें आपका थर्मल कंफर्ट, जैसे कि मैंने बोला, 33-34 डिग्री सेल्सियस विद 2 मीटर पर सेकेंड एयर, यू विल बी फुल्ली कंफर्टेबल.
प्लीज सर आपका क्वेश्चन के जो आंसर, तो इंसुलेशन कंफर्ट के लिए डेफिनेटली रिक्वायर्ड, बट सुबह जो बोला ना एक स्केल ऑफ कंफर्ट, -3, -2, -1, न्यूट्रल, +1 ऐसा, तो कूलिंग एंड हीटिंग तो न्यूट्रल, आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, बट थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट -1 पे हुआ, उसका बाद डिस्कम्फर्ट -2 पे गया, उसका बाद डिस्कम्फर्ट -3 पे गया, -3 पे आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, फिजिकली इट वुड बी डिट्रीमेंटल, मे बी फैटल, बट -1 पे आपको फैटल नहीं होगा, बट डिस्कम्फर्ट तो है ही, नेचुरली वेंटिलेटेड हो, यू आर नॉट एक्सपेंडिंग एनर्जी, तो डिस्कम्फर्ट तो है ही, इसीलिए तो फेयर भी इतना डिफरेंस है, तो डिस्कम्फर्ट है बट विद इन अलाउएबल लिमिट, वी आर ट्राइंग टू मेक इट for the affordable building discomfort level as minimum as possible, optimum, we cannot delete discomfort level, राइट। तो ओके आगे चलते हुए, तो अगेन कन्वेक्शन, ये सारे आपके पैरामीटर्स जो डिटरमाइन करते हैं आपका कितना कंफर्ट लेवल रहेगा। इसमें एक चीज जो हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, एक हो गया मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जैसे आप देखते हैं कि बच्चों में बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, आप उनको कुछ भी खिला दो उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा रहता है, तो वो बस बोलते रहेंगे हमेशा भूख लगी है, उनको खिलाते रहो। और अब जब हम बड़े हो जाते हैं भाई नहीं यार और भी खा सकते हैं, बस बहुत हो गया। सो दैट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसमें आप यू आर एक्सपेंडिंग एनर्जी इवन वाइल टू मेंटेन योर रेगुलर बॉडी फंक्शंस ऑल्सो। जैसे आपका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी एनर्जी लगती है, ठीक है, आपका ब्रीदिंग के लिए उसके लिए एनर्जी एक्सपेंड होती है, तो दैट इज मेटाबॉलिज्म। एंड कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये 3 मेथोडोलॉजीज हैं जिससे आपका ये होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो कन्वेक्शन हो गया कि आपका कोई भी एयर, सराउंडिंग एयर जहाँ पर भी है उधर उसको कन्वेक्शन हो रहा है, और रेडिएशन आपके टेम्परेचर बॉडी से जो रेडिएट हो रहा है, जितनी भी हीट आपकी रेडिएट हो रही है वो दैट इज रेडिएशन। कंडक्शन, अगर आप जैसे बैठे हैं सीट्स पे, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हीट आपके में आ रही है दैट इज कंडक्शन। एंड इवापोरेशन हो गया जो आपका स्वेट की वजह से ऐड हो रहा है। तो तो जैसा कि ये मेन चीज़ें हैं ASHRAE 55 में, मेटाबॉलिक रेट, क्लोथिंग इंसुलेशन, एयर टेम्परेचर, रेडिएंट टेम्परेचर, एयर स्पीड, ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब हमने 3 चीज़ें तो बोल दी, एयर टेम्परेचर, वेलोसिटी और ह्यूमिडिटी। 2 और चीज़ हम भूल गए, बेसल मेटाबॉलिक रेट से जो कनेक्टेड है वो एक हो गया आपका एक्टिविटी लेवल, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर नॉर्मल सीटिंग पोजीशन पे हैं तो आपका एक नॉर्मल एक्टिविटी रहता है, अगर मतलब हीट प्रोडक्शन एक रहता है, और अगर आप चलते रहेंगे, ठीक है, तो आप गर्मी होते रहेगी, और फिर आपका जो कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी। और एक चीज़, और कोई चीज़ हो सकती है, जस्ट मतलब इट इज़ नॉट फुल्ली रेलेवेंट और उसको यहाँ पर मेजर नहीं किया जा सकता है, स्टेट ऑफ माइंड। क्या आपको लगता है स्टेट ऑफ माइंड इफेक्ट होता है, राइट? और स्टेट ऑफ माइंड से अब ये देखिए, ये कनेक्शन देखिए, स्टेट ऑफ माइंड जिसमें है और ये जो थर्मल कंफर्ट है ये भी एक स्टेट है, इसका भी कोई गारंटीड नहीं है। मतलब आपका अगला पर्सन बोलेगा, जैसे हम लोग 1 2 3 मतलब स्लाइटली कोल्ड, स्लाइटली हॉट, वो सब बोल रहे थे ना, तो ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ये उस पर इंपैक्ट कर जाएगा, राइट? सो ये हमने एक थ्योरेटिकल बना दिया है, बट रियलिटी में मतलब इट इज वेरी टफ टू, बट इट इज लाइक कि हाँ चलो 90% एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है, दैट इज समथिंग दैट वी रियली काउंट एट, कि हाँ 90% लोग, अब जैसे सरकार बनती है जो भी होती है, इट इज मेजॉरिटी, एवरीवेयर इट इज मेजॉरिटी वोटिंग, ठीक है। सो इवन हियर ऑल्सो कि चलिए जो भी होगा एक टाइप से मेजॉरिटी लोगों में दे विल फील कंफर्टेबल।
तो और थोड़ा सा आगे अगर बढ़ जाए, हाँ, ये हम इंडियन मॉडल पे चलते हैं। ये सेप्ट यूनिवर्सिटी ने आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च इन्होंने स्पेसिफिक टू आवर इंडियन कंडीशंस, जो ASHRAE 55 है वो क्या है, वो मोस्टली फॉर एयर कंडीशन बिल्डिंग्स है, एंड इट इज मोस्टली फॉर पीपल हु आर मतलब जो जेनेटिक ट्रेट्स है वो नहीं लेता है। एज वी सेड कि हम लोग वी फील मोर कंफर्टेबल एट अ हायर, प्रॉब्ली हम लोग 26 पे भी कंफर्टेबल फील करेंगे, बट अगर कोई बाहर के फॉरेनर अगर आ जाएं, उनको 26 बिठा दो, उनको they'll start sweating. So that is why IMAC, जो शॉर्ट में हम कह रहे हैं इंडियन मॉडल ऑफ फॉर अडैप्टिव कंफर्ट, ये इन्होंने बहुत ही बढ़िया मॉडल बनाया है एंड इट इज वेरी सिंपल। तो ये तीन चीजों के लिए बनाया हुआ है, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स। वन हो गया नेचुरली वेंटिलेटेड, जिसमें फुल्ली नेचुरल वेंटिलेशन रहता है। दूसरा हो गया मिक्स्ड मोड। तो मिक्स्ड मोड कैसा हो गया, ये जो आप देख रहे हैं वहां से देखिए फ्रेश एयर भी वहां से आ रही है, गेट पूरा खुला हुआ है, यहाँ पर ये मिक्स्ड मोड वेंटिलेशन चल रहा है एक तरह से, ठीक है, और कंप्लीटली एयर कंडीशन, राइट, जिसमें आप पूरे बंद रूम में, जो कंप्लीटली एयर कंडीशन होता है आपका घर, जिसमें आप बिल्कुल खोलते नहीं हो, पूरे दिन 8 घंटे आप बंद रहोगे, रात के 8 घंटे एसी चलता रहेगा, और फिर सुबह आप फिर सोचोगे यार थोड़ा सा उठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मेरा ये सजेशन रहेगा एसी बंद करके थोड़ा सा दरवाजा खोल दीजिए, होपफुली उठ पाए। ठीक है, ओके। तो इसमें अगर हम स्पेसिफिक अगर ये देखें, ये एक इक्वेशन बेसिकली डिराइव हुआ है जिसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज 0.54 टाइम्स मीन मंथली आउटडोर ट्राइबल टेम्परेचर। तो इन्होंने क्या किया, ऑल्दो हम लोग ह्यूमिडिटी और एयर मूवमेंट को भी कंसिडर कर रहे हैं, व्हाट दे हैव ट्राइड टू डू इज सिंप्लीफाई द मॉडल। ठीक है, आप समझ रहे हो, आप चीज़ें सिंपल चाहते हो ना, इसीलिए तो मोबाइल फोन्स हैव मेड आवर लाइफ सो सिंपल कि बस सब जोमेटो 10 मिनट में डिलीवरी करेगा, और अगर आपने कल परसों में ऑर्डर करने का ट्राई किया होगा तो फिर जोमेटो डाउन होगा, स्विगी भी डाउन होगा। तो सिंप्लीफाई, आइडिया इज सिंप्लीफाई, एंड ये यहाँ पर ड्राइवल टेम्परेचर से कोरिलेट करके दे आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई सच दैट कि ये एक बैंड निकालना चाहते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल रहोगे, नेचुरल वेंटिलेटेड बिल्डिंग में कंफर्टेबल रहोगे, एंड दिस इज द इसी के ऊपर बेसिकली IMAC मॉडल को लेकर के यहाँ पर रिसर्च करेंगे, जो LHP में है, आई एम श्योर, जिसके बारे में सुबह आप लोग सुन रहे थे। सो दिस विल बी अ ग्रेट स्टडी वेयर विल कम टू नो ये एक मॉडल बना है एंड रियल टाइम उसकी टेस्टिंग होगी, वैलिडेशन होगा, सो दैट इज समथिंग रियली गुड। उसी तरह से मिक्स्ड मोड वेंटिलेशन के लिए है एंड एयर कंडीशन बिल्डिंग्स के लिए है। ओके, तो एज वी सेड, मतलब हम लोगों ने पहले ही जस्ट देखा कि मटेरियल्स का भी क्या इफेक्ट होता है जब हम ट्रेन बोगी का देख रहे थे। तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इन टेक्निकल टर्म्स, यू वैल्यू, ठीक है, एंड आर वैल्यू, सो बेसिकली बोथ ऑफ दीज आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो आर हो गया मतलब रेजिस्टेंस, मैं कितना रेजिस्ट कर सकता हूं हीट अंदर आने से, ठीक है, और यू हो गया कंडक्टेंस, दैट इज इनवर्स ऑफ कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, सॉरी। तो आइदर ऑफ दीज, और इसमें अगर आप यूनिट देखेंगे नीचे, ये वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ये क्रिटिकल मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर राइज पर स्क्वायर मीटर, एक अगर ब्लॉक ले लेंगे पर स्क्वायर मीटर में कितना ज्यादा हीट अंदर जा रहा है, ये वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ये मटेरियल का इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। और अगर आप देखेंगे कोई भी इंसुलेशनिंग मटेरियल का वॉट पर स्क्वायर मीटर केल्विन क्या होगा कंपेयर टू नॉर्मल क्ले ब्रिक वर्स, अगर इसी चीज को आप मैं कहूंगा कम या ज्यादा होगा इंसुलेशन का, आपको क्या लगता है, कितने लोग बोल रहे हैं कि कम होगा? क्वेश्चन ये है कि एक इंसुलेशन का कंपेयर टू अ रेड क्ले ब्रिक आपका यू वैल्यू
कम होगा या ज्यादा होगा? कितने लोग कम के पक्ष में हैं? यूनिट आप देख लीजिए, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा हो, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ये यूनिट है। तो क्या लगता है आपको, इंसुलेशन का यू वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा कंपेयर टू क्ले ब्रिक? नॉर्मल आपके भट्टे वाली जो ईंटें होती हैं उसके अगेंस्ट में इंसुलेशन का यू वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा? कितने लोग कम के पक्ष में हैं? ओके, चलो कुछ तो हाथ खड़े हो गए, बहुत ही बढ़िया। और कितने लोग ज्यादा? ज्यादा, ओके, चलिए बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो अगर मैं वॉट को ब्रेक डाउन करूं, व्हाट इज वॉट? अब जैसे हम साइंस में पढ़ते थे, जूल्स पर सेकंड, जूल्स इज एनर्जी, कितना एनर्जी आपका अंदर आ रहा है, ठीक है, राइट? तो मैं क्या चाह रहा हूं, मैं जूल्स पर, इंसुलेशन में जूल्स पर सेकंड कम होगा ज्यादा होगा कंपेयर टू क्ले ब्रिक? कितनी ज्यादा गर्मी अंदर आ रही है? जैसे हम अगर वही कोच का ले लें, मेटल ज्यादा हीट अंदर ले रहा है कंपेयर टू इंसुलेशन, और इंसुलेशन उसको रोक रहा है, राइट? तो कोई भी इंसुलेटिंग, मतलब अगर आपका मटेरियल अच्छा होना है, उसका यू वैल्यू कम होना है, ठीक है? मतलब जितनी यू वैल्यू कम होगी उतनी कम एनर्जी अंदर जा पाएगी, उसका वॉट कम होगा, राइट? तो ये सारी आप, मतलब ये एक मेन चीज जो आप टेक्निकल जब आप देखेंगे या काम करेंगे, ये एक मेन चीज आप देखेंगे ही देखेंगे। तो ये आपको क्लियरली समझना है। किसी भी दो मटेरियल्स को अगर आप कंपेयर, आपको बोला जाएगा कंपेयर करिए, उसके टेक्निकल डेटा शीट आते हैं, टेस्ट शीट्स आते हैं, वॉट पर स्क्वायर मीटर केल्विन देख लीजिए आप और कंपेयर कर लीजिए, बस हो गया आपका काम आसान, आप बन गए, अब आप डिजाइनर बन गए। तो वही चीज मैं कह रहा था, यू वैल्यू इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये एक आप देख सकते हैं। अब चलिए वही सेम चीज अब आप देख लीजिए इधर, इसी स्लाइड में देख लीजिए, ये आपका आरसीसी यू वैल्यू देखिए कितनी है, 3.77, राइट? सॉलिड कंक्रीट यू वैल्यू 2.8, 230 mm ब्रिक 2.24, और आजकल एएसी ब्लॉक जो बहुत ज्यादा चल रहे हैं मार्केट में, ऑटोक्लेव डेरिवेटेड कंक्रीट, उसका देखिए 0.77। ठीक है, बात समझ गए कि आपका यू वैल्यू जितना कम होगा उतना आपको गर्मी कम लगेगी। ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट, ठीक है? और जैसे जैसे आप थिकनेस भी बढ़ाते जाएंगे, देखिए आपकी यू वैल्यू कम होती जा रही है। तो 200 mm ऑटोक्लेव डेरिवेटेड 0.77 है, 300 के लिए 0.54 है, विथ हाँ प्लास्टर है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ पर वही सेम चीज फ्लाई ऐश ब्रिक के लिए भी ओके, आई थिंक यहाँ पर स्लाइड एरर, ओके, कोई बात नहीं। तो अब चलते हैं कि ये तो हो गए हमारे थर्मल कंफर्ट के बारे में, ये हमने मटेरियल्स के बारे में देख लिया। अब हम थोड़ा सा सिस्टम्स का भी देख लेते हैं। क्या ऐसे सिस्टम्स हैं जिसमें, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला कि विथ लेस कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हम थर्मली कंफर्टेबल हो जाएं, ठीक है? तो ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें इवापोरेटिव कूलिंग, ठीक है, वो थोड़ी देर में आते हैं, वो कई लोग जानते होंगे। कूलर, जो घर के कूलर है वही है इवापोरेटिव कूलिंग, ठीक है? तो इसमें लो एनर्जी कंफर्ट में देखिए आपका एक प्रोग्राम भी है, ब्यूरो ऑफ BW का स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम, जिसमें सीलिंग फैंस, आपके एसी और चिलर्स, ये सारे रेटेड होते हैं। देखिए स्टार रेटिंग आती है आपकी, ठीक है? तो सबके लिए आप जितने भी एसी होंगे आजकल सब स्टार रेटेड हैं। और ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने काफ़ी बहुत ही पहले, मतलब आई थिंक 2010 उस टाइम पे जब लॉन्च किया था, और आज की डेट में देखिए एकदम मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। तो आज ये जो LHP प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, आई एम श्योर इसका भी इन 5 to 10 years इसका जो इफेक्ट आएगा, इट विल बी मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसीलिए आज आप लोग यहाँ पर हैं, एंड यू विल बी द, आई वुड से, फर्स्ट जनरेशन
of transformation in Ranchi. ठीक है, तो रूम एयर कंडीशनर में ये आप देख सकते हैं ISEER आ गया है, इंडियन सीजनल। पहले आपका आता था एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, तो वो क्या है, वो सिर्फ एक 35 डिग्री सेल्सियस पे आउटडोर टेम्परेचर पे टेस्ट करके बस दे देते थे कि इतनी आपकी एनर्जी कंजम्पशन होगी, ठीक है, इतना इनपुट एनर्जी लगेगा। तो ISEER में क्या हो गया, इन्होंने सीजनल कर दिया कि अच्छा आप बताइए 35 पे कितना, मतलब जैसे रांची जैसी सिटी में, ठीक है, अब हर दिन तो 35 डिग्री नहीं रहने वाला, ठीक है, कुछ टाइम ऑफ द पीरियड 35 रहेगा, कुछ टाइम 36 रहेगा, कुछ टाइम 38 रहेगा। तो उस हिसाब से उन्होंने सिटी को क्लासिफाई कर दिया और उस पर्टिकुलर 35 डिग्री में कितना आपका एनर्जी कंजम्पशन होगा, कितने घंटे, तो उसको पूरा एवरेज कर दिया। तो सब बेसिकली व्हाट EER इज, इट्स आउटपुट, मतलब कितना आपका ठंडा हो रहा है डिवाइड बाय इलेक्ट्रिकल इनपुट, ठीक है। तो ये हो गया आपका बस EC एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो इसको कहते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार लेबलिंग में, और ये इनफैक्ट हर 3-3 साल में ये लोग इनफैक्ट 2 साल में रिवाइज करते रहते हैं, तो और ये एफिशिएंसी बढ़ती रहती है, ठीक है। तो हो सकता है अभी जो आपका 5 स्टार है 4.5 और 2 साल बाद चल के ये 4 स्टार हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि हमने बोला था सीलिंग फैंस, ये देखिए ये पिक्चर एग्जैक्टली दिखा रहा है जो मैं आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दे रहा था। HVAC चल रहा है और सीलिंग फैन भी चल रहा है, और छोटे से एक स्मार्ट फैन भी, आपने पर्सनलाइज्ड एक फैन भी रख लिया, वो आपको और इफेक्टिव कूलिंग देगा, राइट। और ये चिलर्स जो सेंट्रलाइज सिस्टम है जो इसी बिल्डिंग को ठंडा कर रहे हैं। तो लो एनर्जी कंफर्ट सिस्टम्स में रेडिएंट कूलिंग क्या होता है, अच्छा ये सब ने आपने पढ़ा होगा ना, गर्म हवा ऊपर जाती है, राइट। ये रेडिएंट कूलिंग वही सेम कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें क्या है, ये जो आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डक्ट लगे हुए हैं, ठीक है, एक कहीं पर बड़ा सा फैन बैठा होगा जो हवा फेंक रहा है, ठीक है। अब ये इसमें क्या कर दिया, नहीं हम पूरा ये डक्टिंग वगैरह सब हटा देंगे, हम क्या करेंगे बस सिर्फ ठंडा पानी यहाँ से ले जाएंगे। तो क्या होगा कि आपकी जो गर्मी है वो ऑटोमेटिक ऊपर राइज होगी और उससे जो ठंडक है मतलब वो ठंडा हो जाएगा और ठंडा वापस नीचे गिर जाएगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग कंफर्टेबल। और आपका एनर्जी, ये जो बड़ा सा फैन है ये सीलिंग फैन नहीं है, ये बड़ा सा एयर हैंडलिंग यूनिट है, इसको चलाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है। तो इसको बचाने के लिए ये रेडिएंट कूलिंग सिस्टम हो गया। इस वाले से पीछे तक आवाज नहीं आ रही है, इसको मैं ऑडियंस में। और इवापोरेटिव कूलिंग, इसके बारे में हमने सुना ही था, आई मीन जो आपके कूलर्स हैं वही इवापोरेटिव कूलर्स है। तो ये क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हुए आपका ठंडक आपको दिलाते हैं। डेसिकेंट कूलिंग सिस्टम हो गया कि इसका सिंपल एग्जांपल मैं दूंगा। जैसे आपने कोई भी शू वगैरह खरीदते हैं, उसके अंदर एक छोटा सा सैशेट मिलता होगा जिसमें सिलिकॉन होता है, डू नॉट कंज्यूम, देखा होगा आपने। उसका क्या काम होता है, टू रिमूव मॉइस्चर, टू अब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है। तो उसको हम टेक्निकल टर्म में डेसिकेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये वही सेम चीज डेसिकेंट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं टू अब्जॉर्ब द ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी को, क्योंकि ह्यूमिडिटी को निकालने के लिए भी आपको काफी ज्यादा कूलिंग करनी होती है, ठीक है। इसीलिए तो आप देखते हैं जो आपका स्प्लिट एसी में एक पाइप लगा रहता है, वो क्या काम कर रहा है, जितनी भी आपकी ह्यूमिडिटी है वो वाटर में कन्वर्ट करके निकाल रहा है एक तरह से, ठीक है। तो इसीलिए डेसिकेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड वेज वेर इन यू कैन रिमूव heat with thermal comfort and low energy consumption. और पर्सनलाइज कंडीशनिंग, जैसा कि पर्सनलाइज आपने पंखे रख लिए, एंड अर्थ कपलिंग इज ऑल्सो
अर्थ कपलिंग हो गया कि आपने जो पाइप है उसको आपने ग्राउंड के अंदर ले लिया और जो गर्म हवा है वो ठंडा होकर के वापस आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ग्राउंड के अंदर क्या होता है कि आप 3 मीटर अंदर चले जाएंगे, टेम्परेचर आपका ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। और ग्रीन टेक्नोलॉजीज के बारे में अगर बोलेंगे, ग्रीन रेफ्रिजरेंट, सोलर एयर कंडीशनिंग एंड ट्राई जनरेशन। तो व्हाट इज ग्रीन रेफ्रिजरेंट? ग्रीन रेफ्रिजरेंट होगा कि जो आपके मिनिमल इम्पैक्ट करेंगे ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ये जो रेफ्रिजरेंट जो लीक होता है, अब आपने सब सुना ही होगा क्योटो प्रोटोकॉल में CFC बैन हो गया, राइट। वो क्या कर रहा था? ओजोन डिप्लीट कर रहा था, राइट। तो उसी लिए अब नए सारे रेफ्रिजरेंट्स आ गए हैं विच आर कॉल्ड HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये आप एक कंपैरिजन देख लीजिए, ठीक है। अभी इनफैक्ट जो भी नए एसीज खरीदेंगे आप HFC 32 R32 आपको मिलेगा। R32 इज काफ़ी अच्छा है और आप देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी मीडियम है एंड एनर्जी एफिशिएंसी इज हाई, मतलब वो कम एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। और HC 290 और ये देखिए कॉस्ट भी आपके लो हैं। और HC 290 ये भी एक रेफ्रिजरेंट आ गए हैं मार्केट में, जो आप देख सकते हैं कंपनीज गोदरेज बना रही है। और इसी तरह से अब ये होगा जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ जैसे CFC बंद हुआ था, बैन हुआ था, इस तरह से HCFC भी फेज आउट होगा और मोस्ट लाइकली HFC भी फेज आउट होगा, ठीक है। और ट्राई जनरेशन हो गया कि जिसमें आप हीटिंग, कूलिंग एंड पावर, इनफैक्ट सॉरी मैंने उल्टे रिवर्स ऑर्डर में बोल दिया, पहले आप पावर जनरेट करोगे, उसके थ्रू आप हीटिंग जनरेट करो, उसके थ्रू आप कूलिंग भी जनरेट करो। तो ये आपका खासकर पावर प्लांट्स में होता है जहाँ पर वेस्ट हीट बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर उसी स्टीम को लेकर के जो आपके घर में AC है वो चलता है वेपर कंप्रेशन साइकिल पे, और एक साइकिल होता है वेपर अब्जॉर्प्शन साइकिल, तो उसको यूटिलाइज करके आप ये जनरेट कर सकते हो कूलिंग। तो रेजिडेंशियल अगर स्टार लेबलिंग की बात करें, जैसे हमारे स्टार रेटिंग AC के लिए थे, उसी तरह से आपके स्टार रेटिंग घरों के लिए भी इनफैक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। इट इज़ जस्ट कि वॉलंटरी फेज में एंड आई थिंक दे आर वर्किंग एंड इट विल सून बी लॉन्च्ड। एट जब ये आ जाएगा देन यू विल नो कि मान लीजिए आप किसी घर में आपने रेंट करने के लिए आप गए, ठीक है, बिल्डर ने फ्लैट बना दिया। थिंक अबाउट द मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन। आज आप जाते हो खरीदने फ्रिज या AC, आप पूछते हो ना भाई 3 स्टार AC, 2 स्टार AC या फ्रिज 2 स्टार, अच्छा इसका कितना पड़ेगा, इतना महंगा क्यों? आप इनफैक्ट 5 स्टार नहीं, 4 स्टार ही दे दो। तो वैसे अगर स्टार लेवल सोचिए घरों में होने लगे, दैट इज मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप पहले से ही पता रहेगा कि अच्छा ये 3 स्टार घर है तो चलो बढ़िया है, मैं जा सकता हूं, मैं ले लूंगा, ठीक। और ये इनफैक्ट हमारे म्युनिसिपैलिटी में भी इंटीग्रेट हो जाएगा, सो दैट इसमें आपके लेबल्स मिल जाएंगे आपको। तो इसका एक सिंपल सा है, ये आप देख सकते हैं इसी तरह से लेबल रहेगा, 1 स्टार या 2 स्टार या 3 स्टार या 5 स्टार, जिसमें आपका नेम रहेगा, एड्रेस रहेगा। एंड सबसे मेन चीज EPI स्टैंड्स फॉर एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स, और आप यूनिट देख सकते हैं 30 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, जैसे मतलब ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से तो व्हाट इज 30 किलोवाट आवर, मतलब बिजली के जो यूनिट्स हैं, कितने यूनिट्स आएंगे, 30 यूनिट्स आएंगे पर स्क्वायर मीटर। तो आपका अगर मान लीजिए ये पूरे हॉल का आपका अप्रॉक्सीमेट 200 स्क्वायर मीटर है मान लीजिए, तो 200 इंटू 30 6000 यूनिट्स आपके पूरे साल भर में बिल आएगा। ये आपको इस तरह से पता लगेगा कि आप बिजली पे कितना खर्चा करने वाले हो। ये आपको घर घुसने से पहले ही आपको पता लगेगा, ठीक है ना। आजकल जब इतने प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इनफैक्ट ऑयल के प्राइसेस अब ना बोले तो बेहतर ये है, सो प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस विल इंक्रीज,
ठीक है, और जहां हम वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको पहले से पता रहेगा, अच्छा ठीक है, आप अपनी प्लानिंग कर पाओगे। तो ये एक आप देख सकते हैं, ये कंपैरिजन चार्ट है, मतलब 1 स्टार में क्या क्या आपका मटेरियल रहेगा। ठीक है, जैसे 1 स्टार में आपके नॉर्मल क्ले ब्रिक सिंगल ग्लास रहेगी, और रूफ भी थोड़ा सा नॉर्मल ही रहेगा, और एसी आपका 3.1 का रहेगा। उसी कंपैरिजन में आप अगर देख लें 5 स्टार पे, देखिए वॉल प्लस इंसुलेशन बता रहा है, राइट, और ग्लास भी देखिए डबल ग्लास। ठीक है, ये आपके एसी कंपार्टमेंट्स में इनफैक्ट काफी आप देख पाएंगे वहां पर डबल ग्लास वॉल्स होती हैं। ठीक है, तो वही सेम चीज आ जाएंगे, ऑलरेडी मार्केट में आ गए, ऑल्दो कॉस्टली होते हैं बट दे वर्क। और आपके रूफ में भी ईपीएस इंसुलेशन लगा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी के लिए प्लान है, मतलब 1 स्टार में कितना आपका ये हमारे क्लाइमेट जोन के हिसाब से 5 क्लाइमेट जोन है हमारे इंडिया में, हॉट एंड ड्राई, वार्म एंड ह्यूमिड, कॉम्पोजिट, टेम्परेट, एंड उसी के हिसाब से आपका स्टार लेबलिंग रहेगा। ईपीआई किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। और ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो ऑलरेडी बन चुकी है इंडियन बिल्डिंग्स में। आप बोलेंगे कि अच्छा ऐसा कहाँ बना है, क्या हो रहा है, तो कई सारी चीज़ें हो चुकी हैं पिछले 10 साल में, ऑलरेडी बहुत कुछ प्रूव हो चुका है। और जिस रेट से ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आई एम श्योर कि विद इन मे बी अनदर 2-3 ईयर्स काफ़ी कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। तो ये कुछ बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर कई सारी चीज़ें की गई हैं। तो VRF वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, जो आपका इन्वर्टर एसी की तरह, पहले आपके नॉर्मल एसी होते थे, अब इन्वर्टर एसी आने लग गए हैं, ऑल्दो थोड़े से कॉस्टली होते हैं बट इलेक्ट्रिसिटी जितना बचाते हैं। इनफैक्ट रेफ्रिजरेटर भी आपके इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर आ गए हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वेरिएबल स्पीड पे चलते हैं, कम स्पीड। मतलब पहले क्या होता था, एसी जो आप देखे होंगे वो सिर्फ ऑन ऑफ होता था, जिसमें आपको आवाज़ आती थी, ठक ठक आवाज़ आती थी। इसमें आपका आवाज़ ही नहीं आएगा। इवन रेफ्रिजरेटर आप देखेंगे उसमें कुछ आवाज़ ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो कभी बंद ही नहीं होता है, कंटिन्यूस कम स्पीड पे चलता रहता है, और उससे आपकी एनर्जी बचती है। तो ये कुछ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं, और कुछ ऑफ कोर्स इंटरनेशनल बिल्डिंग्स। इनफैक्ट आई थिंक एक टारगेट होगा कि नेट ज़ीरो कैसे बनाया जाए। नेट ज़ीरो का मतलब हो गया कि कुछ भी बिजली वो कंज्यूम नहीं करेगा। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी बिजली तो चाहिए ऑब्वियसली। तो ये क्या करते हैं कि जितना खर्च हो रहा है वो मान लीजिए किसी सोलर से ले लिया, या और किसी जगह से हाइड्रो से ले लिया, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से उन्होंने जितना एनर्जी चाहिए था वो ऑफसेट कर दिया। बट उसके लिए जितना मिनिमल हो सके पहले वो करना पड़ेगा, कंजम्पशन जितना मिनिमल हो चाहिए, उसको हम नेट ज़ीरो कहते हैं। तो ये आई थिंक इसी के साथ ये वाला टॉपिक्स आई थिंक ख़त्म होते हैं। मैंने थोड़ी सी भगाने की कोशिश की क्योंकि हम लोग काफ़ी ऑलरेडी डिलेड थे। सो प्लीज़ अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो एनीथिंग रिलेटेड टू दिस। अच्छा, थर्मल इंसुलेशन के मटेरियल्स, ठीक है। एक हो गया आप जस्ट थर्मोकॉल, सिंपल सा मटेरियल थर्मोकॉल, ठीक है। अब उसमें एक प्रॉब्लम होता है कि वो फायर का एक इशू रहता है, ठीक है, तो उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट थर्मोकॉल की तरह और एक आता है सिमिलर मटेरियल, एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। एक्सपैंडेड और नहीं एक्सपीएस, हाँ एक्सट्रूडेड, सॉरी। थर्मोकॉल को कहते हैं एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। उसी तरह से एक्सट्रूडेड पॉलीस्टाइरीन लगाते हैं, विच इज स्लाइटली बेटर मटेरियल एंड चीप, जिसको आप लगा सकते हो आराम से। ओवरडेक आप छत के ऊपर भी लगा सकते हो, वॉल्स में भी लगा सकते हो। बस एक चीज़ बस ध्यान रखना है, थोड़ा सा फायर का इशू रहता है। तो अगर आप जैसे दो वॉल्स के बीच में लगा रहे हो, ठीक है, तो ये मैं बोल रहा हूँ प्रूवन है, क्योंकि मैंने अपने घर में, मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ, मैंने अपने घर में AAC ब्लॉक 200 mm EPS मतलब थर्मोकॉल
50 mm एंड फिर से AAC ब्लॉक 100 mm, इतना मैंने लगाया हुआ है। और भुवनेश्वर कितना जाता है टेम्परेचर? 40, 42, 43 आराम से जाता है, ठीक है। कोई एसी नहीं है मेरे घर में, ठीक है। ऑफ कोर्स फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ा सा गर्मी होता है, बट प्रॉब्ली 2 आवर्स के लिए थोड़ा सा गर्मी होता है, बट इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। रूफ स्लैब की वजह से मेनली, वॉल्स तो हमने इंसुलेट कर दिया, रूफ स्लैब में हमने कोई इंसुलेशन नहीं दिया है। अगर रूफ स्लैब पे इंसुलेशन दे देंगे तो गारंटीड एक्सपेंडेड पॉलिस्टाइरीन दे सकते हैं आप, सॉरी एक्सट्रूडेड पॉलिस्टाइरीन XPS ओवरडेक इंसुलेशन के लिए आते हैं, जिससे कि आप चल भी सकते हैं, मतलब वो डिफॉर्म ही नहीं होगा, वो रहेगा। और वाटर प्रूफिंग उसके ऊपर देनी पड़ेगी, थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कॉस्ट स्लाइटली बढ़ेगा बट इट वर्क्स। वेंटिलेशन के लिए, हाँ वेंटिलेशन के लिए हमने खिड़की एकदम बड़ी सारी खिड़की आप रख लो, ठीक है, क्योंकि वो ह्यूमिड भी है। हाँ क्रॉस वेंटिलेशन एग्जैक्टली, क्योंकि ह्यूमिड भी है और ह्यूमिड में हमें हवा भी चाहिए होती है, ठीक है। दो प्रॉब्लम्स दो हैं, एक हीट, दूसरा ह्यूमिडिटी, मुझे दोनों को काउंटर करना है, तो मुझे बड़ी खिड़कियां भी देनी पड़ेंगी ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके, हवा आए। खासकर शाम के टाइम जब ठंडा होने लगता है ना, तो जितनी हीट ऑलरेडी इनबिल्ट हो गई है वो जल्दी से बाहर चली जाए। तो ये सारे बेसिक टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें ऑलरेडी पता है और आप कर सकते हो। आप अगर नया घर अपना बनाना चाहोगे तो सिंपल सी चीजें आप अगर इनकॉर्पोरेट कर लोगे ना, ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड में थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर के साथ थोड़ा सा बैठना होगा, मतलब जैसे हमारे साइबल शाह जी हैं, ही इज वेरी गुड स्ट्रक्चरल इंजीनियर, तो उनका कांटेक्ट ले लीजिए, वो आपको बता देंगे विथ थर्मल कंफर्ट पूरा आपको एनालिसिस करके दे देंगे। बट किया जा सकता है, उसमें क्या होगा कि हो सकता है आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन थोड़ा सा प्रोवाइड करना पड़े। अगर स्ट्रक्चरली आप कुछ नहीं कर सकते हो तो एग्जॉस्ट फैंस देने पड़ेंगे, ताकि एक तो है कि आपका जितना निकल सके, और इंसुलेशन आप दूसरा एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, हाँ विकास सर, वन रिक्वेस्ट फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स इज कि एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स के लिए अगर कुछ किया जा सकता है, लाइक इफ दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के लिए आप बात कर रहे हैं रेट्रोफिटिंग की, राइट? रेट्रोफिटिंग विद रिस्पेक्ट टू थर्मल कंफर्ट, एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी, तो इसमें बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। अगर आप पैसिव डिजाइन की बात करें तो पहला आपका कंडीशन है कि आपका ओरिएंटेशन हम चेंज नहीं कर सकते, जैसी बिल्डिंग बनी रहेगी। सेकंड एस्पेक्ट है शेडिंग को आप इम्प्रूव कर सकते हो थोड़ा सा। रूफ में अगर आप चेंज करना चाहो, कुछ ऐड करना चाहो, दैट वी कैन डू। और एक्सटर्नल इंसुलेशन अगर हम प्रोवाइड कर सकते हैं तो करने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन उसमें जो रेट्रोफिटिंग में है उसमें कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज होता है। रीज़न उसका ये होता है कि आपको एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में एग्जिस्टिंग डिज़ाइन के साथ करना पड़ता है, और उसके लिए हम लोग जो इक्को निवास संहिता है उसमें रेट्रोफिटिंग का हम लोगों ने एक एनेक्शन में दिया हुआ है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रेट्रोफिटिंग का रूल लेके आए, हम लोग कोड लेके आए रेट्रोफिटिंग का, क्योंकि अभी अपने पास जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग भी उसको भी एनर्जी एफिशिएंट और सस्टेनेबल बनाना है। तो अगर उसमें हम लोग और भी कुछ ऐड कर पाए विद रिस्पेक्ट टू पैसिव डिज़ाइन, तो हम लोग वो करना चाहेंगे। तो इसके लिए स्टैंडर्ड्स हम लोग बनाएंगे, लेकिन फिर अभी फॉर टाइम बिंग हम लोग कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं नए, अगले आने वाले वर्षों में 3-4 जो बिलियन मीटर स्क्वायर आने वाला है, उस पर ध्यान दे रहे हैं। अभी जो हो चुका है वो तो हो चुका है, रेट्रोफिटिंग की गुंजाइश थोड़ी सी है, तो उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर रूल्स और एक्ट में आ जाता है तो हम लोग डेफिनेटली लेके आएंगे, और फिर वो बायलॉज में आ जाएगा, फिर आपको अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। उसमें एक कंडीशन ये है कि अगर आप अपने एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में, एग्जिस्टिंग फ्लैट्स में अगर आप 1/3 से ज़्यादा अगर आप कुछ एडिशनल एरिया इंक्रीज कर रहे हैं या फिर आप कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो रेट्रोफिटिंग के अंदर आएगा उस रूल्स में, तो फिर आपको वो कंपलसरी करना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ हम लोग लेके आने की कोशिश कर रहे हैं अभी, लेकिन रेट्रोफिटिंग में अभी हमें ज़्यादा ध्यान नहीं है, ज़्यादा ध्यान हमारा न्यू कंस्ट्रक्शन पे है, जो कि आने वाले दिनों में हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आई हैव गिवन माय आंसर, राइट? यस यस, ओके फाइन। Thank you very much, Kumar ji. For any further question, any queries, do
write to us, to call us. You have all the numbers and everything with you, because further यहाँ से खाली बंद करके जाना नहीं है. You have to get involved in it. Until and unless you get involved, all your buildings, you start studying all your buildings कि उसमें ये चीजें हो रही हैं कि नहीं. Now we'll move on to ENS 2018, which is the code, the detailed code which we will take up then in the residential building. If you know about ECBC, ECBC is for the commercial buildings, but ECBC residential is the Eco Nivas Samhita code. I would like to invite Saha sir for this ENS 2018 code. Last presentation, I think. Yes. Yeah. So, again, I am back. After a fantastic deliberation by Kumar, just I want to conclude this program with ENS. ENS is Eco Nivas Samhita. It could be an extended part of ECBC, whatever Madam said. But there is a small story. I just require just 2 minutes time to give a background of ENS. ECBC 2007, and after 10 years, ECBC 2017, when it came into being, then the power minister was Mr. Goel, and he is just a pragmatic and fantastic person. So when he and he is a chartered accountant, stood fourth in chartered accountant exam. So when the data came to him before him, it was found that we are expending only 9% of energy in commercial building, and DCBC is made for commercial building, whereas the building sector consumes 33 to 40%, going to be 40%, 33% energy right now. Then where that 24% going? That's going into residential building. Then he asked, why are you fooling me? Just for 9% of the energy, just you are going to revise a code, having so much of research and deliberation, and for 24% nothing. Then in 2018, first ENS came into being. After a huge research, I think GIZ was the main source of action, inspiration, and they have done the thing for ENS. So now ENS, just I am not, again it stopped. Okay, thank you. Now ENS, the basic thing between ECBC and ENS is that in ECBC, in commercial building, your envelope part is much smaller than your floor area. If you have a comparison, means floor area to envelope part, then floor area is much higher in a commercial building. Okay, but in residential buildings, we have smaller floor area and higher envelope area. So our cooling load has drastically increased in case of residential building from the envelope. Whereas, so outside heat source is the principal cooling load, and in commercial building, inside means the sources are the principal cooling load ingredients. So ENS has a different approach than ECBC. Definitely energy conservation is the prime target, but approach is different. We have to have, and if you go with the pie chart, you can have, I don't know whether pie chart is here or not. No, pie chart is not here. So if we are going to have a pie chart, then we could see that in residential building, major part of energy consumption is on lighting.
So if we have much daylight within the space, then this could be avoided. So daylight is welcome in residential building. Second is, India, most of the buildings still now, though penetration is much higher, still now the ceiling fan or naturally ventilated building is most common, where ceiling fan is there and from window it is the natural ventilation, air is coming. So we need to address this. We have to increase a specific window to floor area ratio to have natural ventilation, optimum natural ventilation for the space. Daylight I have already told, and then heat gain and loss. For heat gain and loss, there are two parts of the envelope part. The first part is roof. It has been proved from different simulation model and earlier energy consumption data of different buildings that 33% of the cooling load is coming from roof. So if we can insulate roof properly, we may reduce 33% of our energy consumption. That is one part. Second thing, the other envelope part means wall, door, windows. That is the other envelope part, and for that equations has been developed with research. But did we have enough data to make an equation for envelope penetration means heat ingress? No. India is very poor in data. So what we have done means the code GIZ has done, whatever documents I have received from BE, that they have done thousands of energy simulation model for the residential building for different climate zone, different shapes of the building, different orientation of the building, and ultimately for a different window wall ratio, different window to floor area ratio, they have derived a formula for creating RETV. RETV is residential envelope TV heat energy transmission value. So this RETV is the heat ingress. It actually an index that gives you the idea of heat ingress within your building. So if RETV is lower, it is better. If RETV is higher, your building would not comply. There is a minimum RETV value for a different climatic zone of India, and that values a standard value of 15 reached. Just where is RETV? RETV value no. The standard RETV value is 15. Actually, it is window to floor area ratio. RETV value 15 is for compliance of this ENS code. So whenever you are going to have your system means walls, windows, their U values with all the coefficients, you need to reach a RETV of 15. Lower than that, it would be good. Higher than that, it would be not complying. Accordingly, there are window to floor area ratio for different climatic zone. For composite, we have 12.5 minimum window floor area ratio. Now, I just require a further explanation for why it is different. Because we do not require that much of ventilation for all types of climate. Today morning, I have told that for hot and dry climate, you require
lower window areas or ingress areas. So for composite and hot and dry, it is lower. Whereas in warm, humid climate, you require a much window size in relation to the floor area. So it is 16.67. And for temperate, it is not temperature, it is temperate climate, just like Bangalore, where it is no hotter, not very cooler. So just a neutral type of comfort level most of the times of the year prevail, and there 12.5. So again, we do not require that much of outside air into the space. And for cold, again, for cold climatic zone, it is very, very low compared to the other values, because in cold climate also we want to preserve the inside heat within to lower the heating requirement. So if we allow more heat, we allow our inside heat going out, then it would be a problem. So for cold climate also, we require minimum opening areas. So now what is window to floor area ratio? Window to floor area ratio is area openable divided by area carpet. There could be a demonstration of ENS definitely in future programs, how to fill up ENS forms, and everything would be shown to the in the training programs to the upcoming architects and designers, and then these would be provided. Now another thing most important is VLT, visual light transmittance. It is a property of the fenestration or windows of a building. VLT is the glass properties. How much light is available outside and how much light coming within your space. That is defined as VLT. So if we have a certain amount of VLT, a minimum VLT for as per ENS is 0.27, I think. So 27% of the outside light should be available within your space. That should be the property of the glazing you choose. So that is an important factor, otherwise you need to require more artificial light to compensate. VLT is that minimum VLT window, and it depends on the window to wall ratio. Why? If you have bigger windows, then with lower VLT you would have more daylight. But if you have lower window to wall ratio, means minimum amount of window areas, then you require more VLT, more light transmittance within the space. So the graphs is figures are like this, chart is this. For window to wall ratio, what is window to wall ratio? Another term in building physics. Window to wall ratio is the window area. Window area, just opening area as per ENS, opening area, machinery opening area divided by the total wall area, including that opening area. So if you have a blank wall without window, then the length into height would be the total wall area. And then you have the machinery opening area of the windows. Then the total window area divided by the total wall area would be the window wall ratio. So window wall ratio also giving you the daylight availability within your space. It's an indication, index to design that much window wall ratio should be there, and it is maximum that much you can have in your design. Thermal transmittance of roof. I have already told that from roof is a major contributor to your cooling load.
for the load or discomfort level within your space. So it is restricted U value. U value is already described. It is the conductance value from any surface. So U value of the roof is restricted. Maximum U value allowable is 1.2 watt per square meter per degree Kelvin. So above these value would not be complying for a ENS compliant building. And it is a means thermal transmittance of roof. Look, here is the formula equation for U roof. A roof we generally prescribe to have not a single material. Normally in conventional building and many building roofs, and then your waterproofing is the common thing, conventional thing. But to comply ENS means to have roof U value 1.2 watt per square meter, you need different layers of material. So these different materials we generally suggest, Biplab Kumar already told that you need an insulation. But normal mere insulation would not be very feasible, because if though it can take your stand your load, a human load, but it would be means weathered. In very few rain would be there. So we generally prefer, I have done many buildings with these types of thing, roof insulation. So first you have your bare concrete roof, maybe 4 to 6 inches. Then over that you have to have waterproofing first layer. Then you are going to XPS, extruded polystyrene or isocyanurate board, and over that at least 2 to 3 inches of concrete again, so that it can sustain the moving load, any kind of load over there. And above that again we would be painting a cool roof paint. Today morning I have described a cool roof thing. Cool roof is a reflective type of paint. It reflects more than 80% of the solar insolation, so that minimum would be absorbed there. And what would be absorbed, that would not be traversing inside because of the insulation. And below the deck generally we have a ceiling plaster. So it would be a fantastic approach to have to reach that 1.2 watt per square meter value. So U roof is the equation 1 by area of roof is summation of Ui into Ai, I is equal to 0 to n. That n is number of layers. So U value of the layer and I value area of that layer. So you can have that U roof equation. And then residential envelope transmittance value, RETV, I have just told that RETV formula takes into account the following: that heat conduction through opaque building envelope components. It is not the roof, roof already gone. Wall, opaque panels, doors, windows, ventilators. These comprise the other parts of envelope. So heat conduction through non-opaque building envelope components, transparent, translucent, window, door, ventilation, and then solar radiation through non-opaque building envelope, transparent, translucent, panel of windows, door, ventilators. So we just heard few minutes ago that the process of heat transmission from outside to inside is by conduction, convection and radiation. Conduction, some part coming from outside layer to inside layer, and from inside layer through convection it is going within the space, and from the ventilator another convection coming within the space if you allow outside air inside. And radiation, definitely when there is a hot surface, that part radiates, we know that part radiates heat to the cooler part, so lower temperature part. So three types of heat transmission going within the space. So RETV formula developed on the basis considering all these types of transmission during making the equation. RETV formula. So RETV formula is this: 1 by entire envelope, A envelope,
And then there are few coefficient A, B, C for different envelope part, one for wall, one for window, and another non-opaque, opaque, and there is opaque part definitely. One is U value and other is SHGC value. One thing I need to tell you that from the glass there are two types of transmission. One is when daylight is coming, I have told with the daylight, because it's a electromagnetic nature, with the light there are some heat ingress. How do we define this or indexing this heat transmission? There is one index called solar heat gain coefficient. It is also a property of glass like visual light transmittance. Solar heat gain coefficient is that coefficient that gives you that how much solar heat outside and how much solar heat is allowed inside. So the good SHGC means that lower solar heat coming inside. So your non-opaque part, means transparent translucent part, has one property. It allows some daylight, so it allows some heat, and that is defined by SHGC. And your non-opaque part, another thing is the same glass. The same glass has an U value. So U value gives you the conduction value, which is outside and which is inside. Outside temperature 38, inside temperature 34. So some heat would be conducted through the glass also, through the transparent translucent part also. So that transparent translucent part, non-opaque part, has two type of heat transmission. One through solar direct heat and one from just due to temperature difference. Temperature difference heat transmission going on, we know. And the opaque part means solid wall. Solid wall has only one type of heat transmission, that is defined by the U value. So lower the U value, lower heat transmission, higher the U value, reverse. So with this formula developed. And RETV equation terms, these are the envelope part, U value part, SHGC, and coefficient. So this, yes, please. It is the glass property, you cannot improve, you can replace. If you have clear glass, then SHGC is, SHGC of clear glass how much? I have to check. I think clear glass SHGC 0.58 or something. And SHGC of good glass, low E glass, it is much lower. So it is a glass property. Now the smart glass or low E glass we have in the market, different companies, Saint Gobain, Asahi, Modigard, they are giving you these kinds of thing, high VLT, visual light transmission high, but lower SHGC. So it is called spectrally selective glass, means that spectral level would be allowed which is visible and other spectral level is going out. Now the coefficient of RETV formula different. I have shown that ABC, this formula, you can see that there is one A part, that is small a, small b, smaller case c, b, smaller case c. These ABC for different climatic zone, these ABC have been defined by these, the coefficients are these. So again, I am just repeating that these coefficients have been developed through numerous energy simulation of different buildings for different orientation, different climatic zone, different height of stories of building. Numerous, thousands of simulations have been done to derive these ABC.
So these are the almost the same thing, heat conduction through opaque and heat conduction through non-opaque. There should be two parts, I have already told. Thermal transmittance, cold climate, except roof, cold climate 1.8. I think it has some mistake. 1.8 is not the figure. It is a mistake. Okay, let me come to the applicability scope of ENS. ENS would be when in Ranchi also, for which residential buildings ENS would be applicable. For buildings greater than 500 square meter of plot area. 500 square meter, do you know Katha? It is 7.500 square meter translated to 7.5 Katha. Actually, when these ENS research programs were going on, so different these GIZ, BE, UNDP people were going to different cities. In Kolkata, when they asked that what should be as per your opinion, then I have told that it should be 7.5 Katha. Q, because in Kolkata, as per Kolkata Municipal Corporation, more than 7.5 Katha goes to building municipal committee for sanction. Lower than that, it is passed by executive engineer. So there is a benchmark, 7.5 Katha. And I don't know whether that is the only reason they have chosen this 500 square meter, but 500 square meter is the criteria, land area criteria, where the building would be coming, that should be ENS compliant. And what would be the ENS part? ENS part, there are two parts, part 1 and part 2. Part 1, there is RETV part and roof insulation part. So you need to fulfill in the envelope, part 1 ENS part, two values. Your roof part, in the roof, it should be 1.4 watt per square meter per degree Kelvin. You cannot go beyond that. And for the other envelope part, the RETV value would be 15. Now, how can you derive RETV value? There is a ENS tool, software tool. You just have your architectural drawing, have mark all the things, put the values and get the RETV. So by that way, we are now in green building certification also. They are asking for RETV calculation for each and every project, and we are giving the RETV calculation for certification. So this is the way. Okay, now ENS in future, ENS would be when coming in with part 2, there is, in ENS part 2, it is not the envelope, it is the energy expending fittings in your building, like lift, like lighting, like air conditioning, ventilation fans in basement, geyser, these things would be coming in ENS already reached in ENS part 2. So when you design your building, there should be two approach. One is prescriptive approach, that they would be telling your RETV value this, and your fixtures, electrical fixtures would be of star rating or like this. That could be a prescriptive type. But through research, they have found that another thing could be possible, that is point-based system. So RETV, one part, that is the envelope part, it is set aside. The electrical consuming part, they have some points. Means if you are going with these 3-star, you would be having X. You would be 4-star having X1. If you 5-star, X2. So summation wise, you have to be some level to reach that compliance. For low-rise building, out of 200, I think, total out of 200, you need to, yes, out of 200. These slides, ENS score, maximum point 200s, minimum points
70 and additional points 130 additional points for different set of criteria. I have told for 3-star, 4-star, 5-star, so different types of points. So additional points are based on that thing. So out of 200 points, you have to score for low-rise building only 47. Means if you are going to have a 2-storied or 3-storied building over a 500 square meter area, then you need to score only 47. If you have an affordable category of building as per RERA or something, then it is 70. And if it is a high-rise building, minimum score should be 100. So out of 200, you have to score 100 for high-rise building for ENS compliance. The point-based system, annual EPI normalized by service life and life cycle cost. All these things are developed on research. So it is not the scope of this one-day training program to give you the details. Definitely the organizer would be thinking in detailed development in their training sessions when each and every point would be described, and you would be allowed for an examination to have your skill level, to show your skill level and passing the exam. So these are the things, and these are the ENS part 2 requirements. It has already told, and the next part, these are the mandatory thing. That ENS part 1, I have told that RETV 15 and roof U value 1.4 watt per square meter Kelvin is the mandatory part. Other than that, these are the mandatory part also. Power factor correction not. The thing is power factor should be 0.97. The lower power factor would not be allowed in these types of building. What is power factor? I think you have your electricity bill, and you may have the power factor mentioned there. So power factor is an electrical thing. How much means kilowatt is what is coming, and what is active load, what is reactive part. So there is a relationship, and the active part, more the active part, your power factor would be higher. It is allowed in most of the electrical means electric supply, just like CSE or whoever, government also, they are allowing 9.97. Below that, you would be penalized. So your design would be according to that. Energy monitoring. Now monitoring, it would be mandatory. We talk about sub-metering. The more you measure, the more you can manage. You cannot measure, you cannot manage. So the much you sub-meter, means elevator, water pump, basement car park, electricity generated from power backup, DG set, electricity generated through renewable energy, solar power, lift pressurization system, all these things should be sub-metered. So the annual energy or monthly energy consumption could be coming for each and individual, going to a total, but individual sub-metering helpful for managing your energy consumption of your building. So you need to have these things in sub-metered for the energy consumption. Common area lighting. Lighting is a major contributor of energy consumption, so you have to measure that part also. Electrical vehicle charging station, we know that Gadkari Sahab already told that by 2023, electric vehicle would be available at petrol vehicle price. No doubt about that. And in Calcutta also, I have seen Tata Nexon EV is almost, in every 10 cars, one Tata Nexon EV is moving. So in other city, I do not know, I cannot tell, but at Kolkata, I am seeing Tata Nexon is moving in huge number, EV, all EV. So that electric vehicle charging station would be mandatory for 100% in future. For last 10 years, it is 5%. Now IGBC is telling it is 40%. Maybe within 2 years, they would be declaring 100% of the parking spaces should have electric charging stations, electric charging points. Electrical systems, these are the distribution laws.
distribution loss you cannot measure, but through your design with voltmeter, ammeter, power analyzer, you can check with an 124 hours measurement that how much loss is occurring. Your incoming power voltage, incoming power current, and what is your after, means if from the substation, where in any equipment, if you put the power analyzer, you can have the voltage and current at that point, at that line. So from that you can have the distribution loss. So these are the almost all parts, the prescriptive part and point-based part. I have told that prescriptive part is there, point-based part is there. So in part 2 of ENS, the prescriptive part means your lamp efficacy should be there. Minimum lamp efficacy for 1 watt, 85 lumen per watt lamp efficacy should be there. So it is in the lift. So lift lighting should have that much efficacy. Other basement lighting should have some efficacy. So they are prescribing the lighting system power consumption as well as the other power consuming units consumption, just like pump, minimum 70% efficiency or BE 5-star. Electrical system, distribution loss already told, and transformer loss already told. Transformer loss in ENS, there is a chart for dry type transformer and oil type transformer, and for what kVA range, what maximum loss could be allowed. So this is again the point-based system, and you have to score for what type of building, what it is in future. Still ENS means compliance is not mandatory. Even ECBC is not mandatory in most of the Indian cities, Indian states. It is coming maybe in 2023, ECBC would be mandatory in major Indian states. But ENS, maybe, we don't know actually, the policymakers could tell you. But the ENS part 1 would be mandatory. I think it could be immediately, but part 2, let's see. I think the GIZ can tell that. So this is almost all the point-based system, how much point in where, all these are in part 2. So the electrical system. In residential buildings, electrical systems, you need to have some point systems. So if you have this 5-star or this much efficacy, this much light power density, star rating of pump and all these, so you would be having some points, and on the basis of points you would be graded and given compliance level. So compliance tool, this is the compliance tool I have been talking about. You can just go to today evening or tomorrow, you just go to ENS tools and get these things available, and it is nothing. If you have a single floor plan or building plan, you can just try this once and get the RETV value. Okay. Thank you all. Just conclude this. Thank you so much, sir. So now you know what ENS is all about. It's simple calculations, simple WFR, WWRs, very simple things, just you have to keep note of things. What your floor area ratio is, what the window wall ratio is, and do the calculations. So I think you have a questionnaire with you. So if you have done that questionnaire, we'll discuss it right away. How many of you have done the questionnaire? Any one of you who has done the questionnaire? You've got the question answer sheets, right? You've collected also. Acha. So we'll discuss this.
यही वाला है आंसर थोड़ी है हाँ ये नहीं ये नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन नहीं दिया था। यही है यही किया है चलिए ये नहीं है, ये पुराना वाला है ये नहीं, इसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन ही नहीं है। हमारे पास प्रिंट आउट नहीं क्वेश्चन का अच्छा चलो ठीक है। एक मंगा लीजिए ना Okay, then let's discuss who is going to give me the right answers. When was GHTC launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India? Let's do it fast. Raise your hands. B. B, how many are for B? Okay, great. Yes, B is the right answer. Econivas Samhita code applies to... Right. This is a national code. Generally, this is what has been given, but state-wise, it can change. The state has the authority to change as per their norms, as per their situation. Even in Jharkhand, the state has the authority to decide what should be best for it. Like for instance, for Uttar Pradesh, they have decided to go in for 250 square meters. So the state has the rights to modify it accordingly. So the next question, the heat production from normal healthy man when asleep is about? How many are for C? Raise your hands. C. No one. And how many for D? Okay, great. The technology used in Lighthouse Project Ranchi is? What does CSB stand for and how many lighthouse projects are being? C. B star rating is based on? How many are for A? B? Okay, good. Seventh question. Were you able to calculate? So what was the answer? So you know how to calculate, right? Great. So Econivas Samhita part 1 is all about A, B, C or D? B. International standard that talks about thermal comfort. So what is RETV? So you were all awake during the session. Good. Very nice to know about that. And now it's time to facilitate our trainers those who have, they have kept you awake throughout the session and you were able to answer all the questions. I would like to invite Vikas sir to facilitate our trainers. I would like to invite Saha sir to please come on stage. Sure. अच्छा अच्छा I would like
I would like to invite Kumar Swiplab ji. हाँ जी. He is the master trainer. I would also like to invite Jha sir and Ramesh sir. Let's have a group photograph. स्क्रीन ब्लैंक कर दूं? रहने दो ना, क्यों प्रॉब्लम है? आप आ जाइए. वोट ऑफ थैंक्स हो गए. I would like to invite Rajan sir for sharing few words and give the vote of thanks for the session. Agenda. इसमें खोल देते हैं. एजेंडा की कॉपी. थैंक्स. आई थिंक आज के इस सेशन को हम लोग यहाँ पे क्लोज वाइंड अप करने जा रहे हैं. बट प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है वो अपने आप में झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है. आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज जितने भी यहाँ पे हमारे की स्टेक होल्डर्स हैं, वी मस्ट से वन थिंग दैट कि वी आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब इन दिस प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, particularly in the BLC component and as well we are doing in the AHP projects. So इस प्रकार की जो कार्यशाला है, हम उम्मीद करेंगे कि ऐसी कार्यशाला होने से हमारे जितने भी टेक्नोग्रेट्स हैं, जितने भी हमारे लोग जो बिल्डर एसोसिएशन से लोग हैं, ये सारे लोग आने वाले दिनों में जो एक मास हाउसिंग को लेके जो चैलेंज है उसको एड्रेस कर पाएंगे. एंड वी रियली थैंक्स कि आज़ादी के 75वें सालगिरह मनाने के उपलक्ष्य में जो 75 ट्रेनिंग किए जाने हैं उसकी शुरुआत झारखंड ने की है. सो आई रियली थैंक टू आवर डायरेक्टर सर. धन्यवाद सर को देना चाहूँगा. सर अभी हमारे साथ नहीं है क्योंकि सर को एक प्रेजेंटेशन देना है पंचायती राज के इलेक्शन को लेके, तो सर वहाँ गए हैं. ऑन बिहाफ ऑफ सर आई रियली थैंक आप सभी लोगों को कि आप लोग यहाँ पे आए. मैं साथ ही हमारे साथ सर CN झा सर हमेशा गाइड के रूप में रहे हैं. हर हमेशा झारखंड को उन्होंने प्रायोरिटी दी है. सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने इनरीच किया इस हाउस को, लोग जान पाएँ. और सर का अनुभव काफ़ी पुराना है. मैं सर को 5-7 साल से जानता हूँ, जब से मैं PMY देखा हूँ. सर का एक कंटिन्यूस एफर्ट रहा है इन चीज़ों के ऊपर पे. एंड कई मायनों में लाइट हाउस परियोजना जिसका मैं भी एक अहम हिस्सा रहा हूँ, सर ने बहुत सहयोग किया, तभी हम लोग यहाँ पे लाइट हाउस लेके आ पाए हैं, जो कि अपने आप में अद्वितीय कहेंगे कि पूरे इंडिया में 6 जगहों में से एक जगह बन रहा है. मैं अजीत सर भी नहीं है हुडको से, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि वो आए, अपना समय निकालें. हमारे साथ गजानंद सर थे जो टाउन प्लानर. उनकी एक विशेषता रही है कि वो ऐसे किसी भी कार्यक्रम में वो एक इकलौते ऐसे पूरे झारखंड के एसेट हैं जिनको इन सारी चीज़ों की समझ है. तो मैं चूंकि अभी है नहीं, लेकिन उनके बिहाफ में भी मैं उनको सर को धन्यवाद देना चाहूँगा. इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे शैलेश सर और असिस्टेंट डायरेक्टर NULM सर दोनों थे. आप दोनों लोगों का सर धन्यवाद.
साथ ही इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाए हैं, जो विकास सर ने किया है GTZ के द्वारा, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी तरीके से जो एक होता है अम्ब्रेला, दैट इज़ व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो महुआ के तरफ से रहा, मैं निश्चित रूप से उनको जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, हमारी वहाँ की जो टीम है, उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि लेट अस स्टार्ट इन झारखंड, और हमने यहाँ झारखंड में अच्छा करके दिया है। सो सर थैंक यू, एंड GTZ के पूरी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा। आप पिछले एक सप्ताह से काफ़ी एफर्ट किए हैं, काफ़ी मेहनत की है, और इसलिए हम इस कार्यक्रम को सफल कर पाए हैं। साथ ही हमारी जो टीम है, जो PMY की टीम, स्टेट की टीम है, उन लोगों ने भी लास्ट मोमेंट में काफ़ी कोऑपरेट किया, और हम लोगों ने इस टीम को यहाँ पे लेके आए कि हम यहाँ पे इस प्रोग्राम को सफल कर पाएँ। सो थैंक यू वंस अगेन। आई रिक्वेस्ट जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी लोगों का जो BIT मेसरा से आए हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से आए हैं, RMC के लोग हैं, जुटको के लोग हैं, और भी बहुत से जो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आपने इस कार्यशाला में आए। प्लीज़ टेक अवे, जैसे गजानंद सर ने बोला था, आप यहाँ से चीज़ों को लेके जाएं और आगे अपने कार्य क्षेत्र में इसको कहीं ना कहीं उपयोग में लाएं। आने वाले दिनों में हम और भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे, हम उम्मीद करेंगे कि आप उसमें भी पार्टिसिपेट करें। सो फाइनली थैंक यू ऑल। So we had a huge number out here in participating during the conference. We would not be able to distribute to everyone, but yes, top 5 certificates. Let's see who's the lucky one. We'll distribute the certificate to top 5 of the participants, and then we will move on to the site because we are really getting late for the site, and that experience really matters. So I'll just announce a few names. First of all, I would like to honor the master trainers who came over all the way from Kolkata. I would like to invite Jha sir if he could facilitate our master trainers with the certificate. Mr. Saha, उल्टा कर लीजिए। And Mr. Kumar Biplab. I would like to invite Shailesh Kumar Mehto ji, and I would request Architect Ma'am to come over to facilitate. I would like to invite Ramesh sir to facilitate. Mr. Sinha, Ryan Chand Sinha, Assistant Professor from BIT Mesra. I would now request Mr. Prasoon Kumar from RKDF University. I would request sir to please.
I would also request Sushmita Rani. Sir, please, if you could stay back. Sushmita Rani, so that we could facilitate. Thank you so much. Now let's conclude the session and we'll move on to the site. And if you are interested in having a group picture, you can come over here or you can decide the place. We would like to facilitate Rajan sir. And I would like to invite Shailesh sir. बोलने में बहुत खुशी हो रही कि ये मुझे दूसरा पौधा मिल रहा है। धन्यवाद। And also I would like to invite Ramesh sir. From BMTPC. So let's have a group photograph. Downstairs. Okay, there is one poster out there in the ground floor. We'll have a group photograph and from there itself we can proceed. Thank you very much. We'll have the next session out there at the site itself where you'll also be served the high tea and you'll be taken the round of the entire site. And a bus has been organized downstairs. Please assemble there for the photograph and from there itself we'll guide you how to go about it. We'll give it to the